377 श्री राजेश वर्मा जी। माननीय सभापति जी महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे जनपद सीतापुर में सेना की सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसमें कुछ भूमि हमारे सीतापुर शहर के अंदर भी आती है। पड़ी हुई खाली भूमि के उपयोग के लिए एवं शहर की सीमा के अंदर पड़ी हुई खाली भूमि को बाजार भाव पर जनता को देने का पूर्व में अनुरोध किया था, जिस संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिखित रूप में ये जवाब दिया गया था कि सेना की पड़ी हुई खाली भूमि पर जल्द ही सेना की गतिविधि शुरू होगी, परंतु आज तक इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। अतः अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय का अनुपालन कराने के लिए निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय जी, आपने मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय मानव सिंधरी अजमेर को वर्ष 2017-18 में उच्चतर अधिगम संस्थान HLI प्रोजेक्ट सेंटर के तहत कक्षा 8 तक खोला गया था, जहां वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 425 है। उक्त विद्यालय वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित CPWD के भवन में अस्थायी रूप से संचालित है। इस अस्थायी विद्यालय भवन के वर्तमान कक्षा कक्ष 25-30 विद्यार्थियों की क्षमता वाले हैं, जबकि प्रत्येक कक्षा में 44 से ऊपर विद्यार्थी अध्ययनरत है। उक्त विद्यालय में लगभग 21 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके आवास की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण समस्त कार्मिक जयपुर अथवा किशनगढ़ से प्रतिदिन अनेक समस्याओं के साथ आवागमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में CBSE तथा KVS के नियमानुसार कक्षा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कला कक्ष, संगीत कक्ष, कार्यानुभव कक्ष, खेलकूद विभाग, पुस्तकालय भवन एवं खेल मैदान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है। जबकि उक्त विद्यालय के साथ शुरू हुए नागौर, तिवरी, जोधपुर एवं पाली के केंद्रीय विद्यालयों में अपने स्वयं का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ कक्षा 12 तक कर्मोन्नत होने को तैयार है। अतः सभापति महोदय, केंद्रीय विद्यालय बांधव सिंधरी किशनगढ़ के नवीन भवन निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु बजट आवंटन चालू बजट 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं में स्वीकृत करावें। साथ ही उक्त विद्यालय को कक्षा 12वीं तक क्रमोन्नत कराने की सक्षम विभाग कार्रवाई कराएं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री जगदम्बिका पाल जी। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देवरिया संसदीय क्षेत्र के नौजवानों की समस्या की तरफ आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में नौजुवक भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, निरंतर तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सेना भर्ती केंद्र वाराणसी में होने के कारण अर्थाभाव में जाने आने में कठिनाई होती है, जबकि देवरिया में सेना की लगभग 40 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देवरिया में सैनिक भर्ती केंद्र स्थापित करने की कृपा करें, जिससे देवरिया कुशीनगर के साथ सीमा से सटे बिहार के जिलों के भी नौजवान इसका लाभ लेकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवेंद्र सिंह बोले जी। श्री विष्णु दयाल राम। धन्यवाद सभापति जी। आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।
झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों यथा बरगढ़, भंडारिया, रंका एवं छतरपुर में बड़े पैमाने पर भूंइहर मुंडा भूंइहर समाज के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में इस जाति के लोग अनुसूचित जाति में हैं, जबकि इनका रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति आदिवासी समाज से मिलता जुलता है तथा इनकी वर्षों से पुरानी मांग है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ इन्हें भी मिल सके। विदित है कि झारखंड के सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में भूंइहर मुंडा भूंइहर जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है। विदित है कि उक्त संबंध में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखंड रांची के द्वारा पत्रांक 237 दिनांक 25/2/2021 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची को विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा भूंइहर मुंडा भूंइहर जाति को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु लिए गए निर्णय को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची के प्रधान सचिव के पत्रांक 14/ दिनांक 3/9/2016 कार्मिक 1738 दिनांक 18/3/2021 को सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को अनुशंसा भेजी गई है। अतः माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय एवं उक्त संबंध में भेजी गई अनुशंसा के आलोक में भूंइहर मुंडा भूंइहर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सभापति जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे झारखंड राज्य में दो प्रमुख क्षेत्र हैं, संथालपरना और छोटा नागपुर। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड के संथालपरना क्षेत्र के बड़े हिस्से में व्याप्त हताशा और अलगाव की भावना का ही नतीजा है कि वहां नक्सलवाद फैल रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें न केवल व्यवस्था ने अनदेखा किया है, बल्कि वे अपनी जमीन पर ही क्रूरता, शोषण और अपने ही देश में पराये किए जाने का एहसास का शिकार हैं। संथालपरना की सामाजिक आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ आय का मुख्य स्रोत एकमात्र खेती ही है। हम एक व्यापक कार्य योजना की तत्काल आवश्यकता देखते हैं ताकि रोजगार देने वाली शिक्षा के अच्छे और समान अवसरों पर विशेष जोर देने के प्रयासों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संथालपरना के जिले देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहबगंज और दुमका देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। स्वास्थ्य, साक्षरता, शिक्षा, आय आदि के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोगों की दयनीय स्थिति की भयावह तस्वीर सामने आती है। झारखंड में अधिकांश आबादी गरीब लोगों की है। इस प्रदेश के पास भारत के खनिज संसाधनों का 40% हिस्सा है, लेकिन इन संसाधनों की उपलब्धता से आम लोगों के जीवन पर कभी कोई खास भला नहीं हुआ है। गरीबी और अज्ञानता झारखंड में अभी भी कम साक्षरता दर, स्कूलों की खराब दशा और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। इसीलिए मैं 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूं। संथालपरना क्षेत्र में इन विद्यालयों के लिए जरमुंडी, दुमका में, देवघर में और महागामा में ये आदर्श स्थान है। इन स्थानों पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेंट्रल स्कूल की स्थापना की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। नियम 377 के अधीन एक प्रस्ताव आपके माध्यम से सरकार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, जहाँ पे उनके पिता श्री राजा सुद्धोधन और जहाँ पे वो बचपन के 29 वर्षों तक गौतम बुद्ध होने के पहले सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने व्यतीत किया था। और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उस तरफ नेपाल में लुम्बिनी है। इस लुम्बिनी और कपिल वस्तु पे दुनिया के बुद्ध देश जो बुद्धिस्ट को मानते हैं, ऐसे थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, चाइना, कंबोडिया, मलेशिया, इन सारे देशों के लोग आते हैं। लेकिन
उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत नेपाल की 1850 किलोमीटर की सीमा मिलती है, उस पे परंपरागत रूप से नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, और 2009 में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त पहल के कारण दोनों देश के बीच में व्यापार और पारगमन का भी एक आसान बनाने के लिए समझौता हुआ। इस समय वर्तमान में हमारी सरकार भारत नेपाल सीमा के साथ बीरगंज विराटनगर में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना चुकी है, और आज पूरे देश के बॉर्डर के साथ, चाहे म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इसके साथ 13 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है। मैं आपके माध्यम से कि इस भारत और नेपाल के साथ जो संबंध हमारे हैं उसको, और उस लुम्बिनी और कपिलवस्तु को देखते हुए हम उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ककरवा पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मांग करता हूं। अतः मैं इस बौद्ध सर्किट में उन सुविधाओं को आसान करने के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बढ़नी और ककरवा पे अगर ये बन जाएगा तो इससे इमिग्रेशन सेंटर भी और व्यापार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, रोजगार भी मिलेगा, उसका भी अवसर पैदा होगा और दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कासवा जी। डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवचारी महास्वामी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सांगोला तहसील है। सांगोला से सोलापुर के बीच की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। सांगोला में अच्छे क्वालिटी के अनार फसल बड़ी मात्रा में होती है। सांगोला के अनार विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ मंगलवेढ़ा की ज्वार सुप्रसिद्ध है। मंगलवेढ़ा की ज्वार को पूरे देश में मांग है। किसानों को शहर की मंडी से जोड़ने के हेतु तथा बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए परिवहन की दृष्टि से रेल यह बहुत ही कम खर्चीला साधन है। यदि सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेलवे लाइन शुरू होती है तो सांगोला और मंगलवेढ़ा के किसानों को केवल सोलापुर ही नहीं तो देश के अन्य शहरों में भी उनका माल भेजने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। सांगोला और मंगलवेढ़ा के अनेक किसान और व्यापारी द्वारा सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर यह रेल सेवा शुरू करने बाबत निवेदन दिए गए हैं। मंगलवेढ़ा के विधायक लोक प्रतिनिधि द्वारा रेल मंत्रालय को भी निवेदन दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने बाबत मंगलवेढ़ा, सांगोला और सोलापुर के लोक प्रतिनिधि और रेल मंत्रालय के अधिकारी की संयुक्त बैठक बुलाए और सांगोला मंगलवेढ़ा सोलापुर रेल मार्ग को स्वीकृत प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। आपसे मुझे नियम 377 के तहत बोलने का मौका दिया। महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्रालय, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन का जो सिचुएशन है, वो जितनी तारीफ करो अपनी सरकार की, मोदी जी की और रेल मंत्रालय की, रेल मंत्री जी की, उतनी कम है। महोदय, मैं आपसे एक माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से उनका एक ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपदा काल के कोरोना में देश में काफी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशन पे कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया। जहां पूर्व समय में ठहराव चलता आ रहा था, जैसे कि आप जानते हैं गोरखपुर में करीबन 1 लाख यात्री रोज गोरखपुर स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है, जिसमें सहजनवा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15007, 15008, गोरखनाथ एक्सप्रेसवे 19038, 19037, अवध एक्सप्रेस 22537, 22538, कुशीनगर एक्सप्रेस 1124, 1123, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 15273, 15274, सत्याग्रह एक्सप्रेस शामिल है। अतरंग पीपीगंज और कैंपियरगंज, यहाँ पर से मुझे बहुत देवतुल जनता के बहुत लेटर्स आते हैं कि उनको 18201, 18202 और 18205, 18206, 15005, 15067, 15068, 15008 का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, उपरोक्त ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र उल्लेखित स्टेशनों पर सुनिश्चित करें कि कृपा करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को रेल की सुविधा मिले। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। श्री जुगल किशोर शर्मा।
धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे नियम 377 के तहत बॉर्डर क्षेत्र के लोगों की समस्या को उजागर करने का मौका दिया। महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू अंतर्गत भारत पाक सीमा पर रह रहे किसानों की दयनीय दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र में कांटेदार तार लगाना बहुत ही जरूरी था, जिससे हम अपने दुश्मनों को रोक पाते हैं, पर दुर्भाग्यवश तार के उस पार हमारे किसानों की कई एकड़ ज़मीनें भी हैं और जो बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें धान आदि की फसल जो है वो लगाई जाती थी और धान की खेती कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनके ज़मीन के तार के उस पार चले जाने से ना ही वो अब उस ज़मीन पर खेती कर पाते हैं और ना ही इन लोगों को कोई मुआवजा मिला है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि उनकी दयनीय दशा को देखते हुए जिनको मुआवजा नहीं मिला है, उन किसानों को की एक सूची जम्मू कश्मीर सरकार से मंगवाई जाए ताकि उस जमीन का मुआवजा उन किसानों को यथाशीघ्र मिल सके, जिससे वह अपनी जिंदगी गुजर बसर ठीक प्रकार से कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री दुर्गादास उइके जी। माननीय सभापति जी, मुझे आपके माध्यम से यह विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसके लिए आपका आभार। यदि हम सहायता की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जब भी संकट और विपदा की घड़ी आई, हमारे देश ने हमेशा ही विश्व जगत को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। भारत ने कोविड महामारी हो, उसमें वैक्सीनेशन, रूस यूक्रेन युद्ध हो अथवा वैश्विक स्तर की किसी भी प्रकार की समस्या हो, सदैव सभी देशों की सहायता की है। श्रीलंका में भी जब आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो अपनी ओर से एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जो सहायता दी जानी चाहिए वो हमने प्रदान की है। महोदय, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, जो हमें लोक मांगल्य हित के लिए सर्वदा सहायता का भाव जागृत करती है। आदिकाल से चली आ रही हमारी सत्य सनातन की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा ही हमें सहायता का पाठ पढ़ाती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, जो हम विश्व के अन्य सर्वाधिक शक्तिशाली 20 देशों को भी सहायता प्रदान करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व सहायता दिवस रूपी वैश्विक विचार को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रस्तुत करने हेतु मैं यह प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महोदय, भारत देश कृपया अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो। हर समस्या के समाधान व मानवीय मदद के लिए सदैव तत्परता के साथ खड़ा रहा है। जब भी विश्व में मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हुए हैं, हमारे राष्ट्र ने हमेशा मानवीय सहायता के लिए अपनी ओर से जो बेहतर हो जरूरतमंद देशों को सहायता पहुंचाई है। मेरा आग्रह है, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, साइकिल डे, पर्यावरण दिवस, योग दिवस मनाए जाते हैं, वैसे ही भारत राष्ट्र के सहायता के भाव को देखते हुए पूरे विश्व में विश्व सहायता दिवस मनाए जाए, यह मेरी विनम्र मांग है। धन्यवाद जी। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। श्री गोपाल शेट्टी जी। स्पीकर साहब। धन्यवाद सभापति महोदय जी, मुझे नियम 377 के अधीन सूचना को पढ़ने की आपने अनुमति दी। अपने संसदीय क्षेत्र नॉर्थ मुंबई के अंतर्गत CPWD ग्राउंड CTS नंबर 2840-2840 मालोनी मलाड पश्चिम मुंबई 9595 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के शिथिलता की वजह से उपयुक्त स्थल पर सभी औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात आज तक भी गार्डन, बगीचा और खेल के मैदान को विकसित नहीं किया गया है और ना ही स्वीकृत लेआउट के अनुसार यहां पर जो स्कूल और केंद्रीय कार्यालय एवं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण प्रस्तावित है वह हो नहीं सका है। उपयुक्त रिक्त पड़ी केंद्रीय भूमि को विकसित करके संदर्भित कार्यों को करवाए जाने हेतु विगत 8 वर्षों से निरंतर पत्राचार करता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे अत्यधिक खेद एवं आश्चर्य है कि यह कार्य बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और अब
जबकि लेआउट इत्यादि स्वीकृति हो चुकी है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इन कार्यों को करवाए जाने में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। अंत सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उपरोक्त रिक्त पड़ी केंद्रीय भूमि में गार्डन, बगीचा और खेल कूद मैदान हेतु विकसित करके स्थानीय जनता को सुलभ करवाए जाने और तत्पश्चात स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्कूल एवं केंद्रीय कार्यालय और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कराए जाने हेतु निर्देश किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। सभा की सहमति हो तो 377 माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद ले लें। आइटम नंबर 19 और 20 माननीय वित्त मंत्री जी। Thank you, Speaker, sir. We have come up with the first batch of supplementary demands for grants for the year 2022-23. And I'm grateful to all the 60 members, honorable members, who participated in this debate and have actually raised very substantial issues of the supplementary demand for grants. So with your permission, I certainly will address and try to answer questions which have been raised and certainly address the issues which have been concerning the members. So this first set of supplementary demand for grants is coming at a time when the entire world and economies of both the developed and emerging markets are facing severe headwinds. But about how India is positioned in this, I would like to just draw the attention of the House and also quote from the World Bank's report, which covers all the areas of challenges which economies are facing, and therefore it gives a snapshot, a good snapshot of what India is positioned like. And everything that I'm reading are quotes from the World Bank, so there's no paraphrasing here. The government's policy, and this is from, before I start, this is from India Development Update. Navigating the Storm is the name of the report. And this is a report on the Indian economy, which was issued on December 5th, 2022, just a few days ago. So the government's policy, I'm quoting, the government's policy response to the external shock aimed at maintaining macroeconomic stability and protecting vulnerable households has been carefully designed and well targeted, given increasingly limited fiscal space. Like the COVID-19 response, it combined demand and supply side policies. So that's one picture about the macroeconomic situation. The second, despite, quote again, quote again, India's forex reserves above US $500 billion are among the largest holdings of international reserves in the world, and together with net forward assets provide adequate buffer against global spillovers. Then it goes to say, India's economy grew faster than most of the major emerging market economies in Q2, that is, of financial year 2022-23. It grew, of course, this is an addition I want to draw here, it grew more than Brazil, Mexico, China, South Africa, and Thailand. The report also says short-term
External debt was 4% of GDP in 21-22, a decline of 1.4 percentage points since 12-13. Since the taper tantrum in 2013, India's forex reserves have almost doubled and provide better coverage of external debt than other emerging market economies. Then it goes to say, India is more resilient relative to the other EMEs, with strong growth, low private sector indebtedness, and high foreign exchange reserves, but with high public debt and a recovering banking sector. The last two quotations from the same report. India's economy is relatively more insulated from global spillovers than other emerging markets. India is less exposed to international trade flows and relies on its large domestic market. India's external position has also improved considerably over the last decade. And the last quote from this World Bank report is, amidst intensifying global headwinds, India is better placed than it has been in the past and compared to its peers to manage external macro financial shocks. So this actually gives a picture of where India is today. And these are after looking into the fundamentals which is prevalent today. And therefore, this particular first batch of supplementary demand for grants is coming in this backdrop. It is coming in this backdrop, which is not claimed by me, but it is a picture which the World Bank has given for us. This supplementary demand for grants includes 75 demands, 6 appropriations, and the out of the cash outgo, which is a total of 3,25,756 crore. The total gross additional expenditure is, of course, 4,35,938 crores. The revenue component of the cash outgo is 2,94,703.86 crores, and 31,052 crores is under capital section. Besides this, we are also coming up with the excess demand, the excess grant demand, which pertains to the 2019-20 for 3 appropriations which had to happen, and this is completely on the recommendation of the PAC, the Public Accounts Committee, and that totals 32,637 crores. So I know quite a few members have gone into the details of what these supplementary demand have been for. I'll just highlight as to how these are demands which are so critical for us now. And I'm sure I didn't hear anybody objecting to any of these supplementary demands. Just to highlight, the fertilizer subsidy that we are demanding as a supplementary is 1,09,288.95 crores. And I want to highlight the fact that India, which is largely an importer of fertilizers, will have to now also start working on self-sufficiency as regards fertilizer manufacturing in this country, and a lot of efforts are going on that score. But even with that being so, both the indigenous manufacturers and suppliers of fertilizers, as much as the imported, do get the subsidy. So this 1,09,000 odd crores are going for indigenous as well as for imported subsidy for both the phosphorus and potassium imports which are happening. Also for urea, both for the import and also for domestic manufacturing. So it's not as if everything which is being given as subsidy is only going for imported variety, but it's also both for the domestic. Food and public distribution gets 80,348. This also is going towards the Garib Kalyan Anna Yojana,
and also for the decentralized procurement of food grains under the NFSA. Rural development, normally and largely, many members spoke about why Manrega gets less, why Manrega shouldn't be given more, why Manrega is not being utilized. I would just want to highlight the fact, sir, that while we'll talk about the Manrega in specific, the Manrega component of the supplementary demand for grants is for 16,400, which is the National Employment Guarantee Fund, and grants for creation of capital assets, which is 16,400 under Mahatma Gandhi. So both the wage component and the material component are being given through this 45,177, which we ask from you. So on the petroleum natural gas component of the supplementary demand, which is 24,943, I will spend a few minutes on that because I want to put forth to many members who have been talking about this as to where this money is actually going. It is certainly going to the oil marketing companies to an extent because domestic LPG operations and also for compensating for several of the losses which the OMCs have made. So this money goes to them. But more importantly, a total of about 8,000 crores from this 24,000, which is in this supplementary demand, actually goes for the Ujjwala component, meaning for the LPG supply which is happening for the poorest of the poor under the Ujjwala scheme. Remember, I said it in the budget that for every cylinder, there shall be 200 rupees given for the Ujjwala scheme beneficiaries, because that is the way in which we want to cushion at least somewhat for the price increases. So 8,000 crores, sir, is being given from the BE and from this supplement, total put together 8,000 crore, to take care of the gas price increase, which should not hurt the poor. And therefore, for many of the members who raised voice saying, Gharib ke liye Ujjwala cylinder de diya, magar daam badh gaye, from budget till today, that 200 rupees per cylinder to the poor is being given, and the total which is now both BE and here put together. BE, in fact, we had given only about 800 crores. Here, 7,210 crores is being added to it so that the Ujjwala consumers of LPG are given sufficient cushion. So I want that to be taken note of. Railways have been given 12,000 crores. And Railways gets 12,000 because that will meet the capital outlay of railways, and after all, that has to be improved because the infrastructure facility for the railways is a very critical thing for the armed janta who move in trains. I am also proposing, which is not a part of this, it might come in the future, but I would like, for the comfort of many of the honorable members who are concerned about railways and work in railways, particularly capital expenditure which is required, this supplementary grant talks for 12,000 crores, but in all probability, what is under consideration is something which I want to put before you, about 10,000 crores over and above this 12,000, which is part of this, is also going for railways for their infrastructure capital expenditure, which is under consideration, almost reaching to the logical conclusion. Transfers to J&K, 8,956. I want this to be reiterated. I want to highlight the fact that for meeting revenue and resource gap, an additional expenditure for Jhelum Tavi flood recovery project, both put together, 8,956 is being given to J&K. This is over and above what we had given for J&K during the BE stage, that is the budget stage. Now we are giving further for J&K by transferring 8,956. Again, over and above the budgeted estimate is 1,400 crores, which is being given to Puducherry for providing additional central assistance to meet the revenue and resource gap. So
the supplementary demand for grants is coming up with these, and I'm sure not one member of the parliament, I'm very grateful, has spoken saying you shouldn't be doing this. On the contrary, more is being asked, but certainly we have provided for these, which I want to highlight. So now I go to picking up on the topics on which many members have spoken, other than the contents which have been specified in the supplementary demand for grants statement itself. Members have raised a lot of issues on which I go by issues in which several members may have spoken on a particular issue, but I go by issues so that many members' questions can get answered. So the food and fuel and fertilizer subsidy, there were questions asked. And also drawing from that and also drawing from the fact that the amount which is claimed during the supplementary demand for grants, people felt if B at the time of B you mentioned something, today you're raising so much more. What is the level of assessment then and what is the level of assessment now? How is it going to touch your fiscal deficit commitments that you've given? I want to highlight the facts, sir, that in 2008-9, global financial crisis, there were 2 supplementary demands. The Constitution allows you to do 2, 3, not beyond 3, of course. And during the global financial crisis, which of course then was big, but now looking back with the benefit of hindsight, we are at a pandemic and post-pandemic war-related economy globally affected. During the 2008-9 global financial crisis, through the 2 supplementary demand for grants, 20% more than what was stated in the budget was brought under the supplementary demand. 20% more. So if we are talking about BE time assessment, your assessment is not good enough, you're not able to get a picture, you should have done a better assessment rather than come with a big amount during supplementary. No, budget makers then, now, all look at the avenues of revenue and also the ways in which allocations can be made. And as you go through the year, you are in a position to raise more, bring in more demands, and this is absolutely acceptable in the process of budget making. So there's nothing unusual this year that we've come with a huge demand. 20% of what was, of the original budget was brought in even after 2008-9 crisis. Sorry? Extraordinary, sir. I agree, extraordinary. We can always rank which is even better or worse extraordinary, but anyway. So, global financial crisis. You brought up 2 supplementary demands for grants. 20% of what was given in the budget estimates have been brought as extra supplementary demand. 2020-21, immediately post the pandemic, there were again 2 supplementary demand for grants, and in that 19% more than what was originally budgeted for has been brought in. And now, with this just 1, and possibly there will be 1 more during the budget time and not beyond that, only 8% of the current budgeted estimate is being brought in here. So I want the members to take cognizance of these facts and so, 20% है financial crisis के बाद 20% उनका. So, sir, वो extraordinary, अभी pandemic के बाद extraordinary इतना नहीं है. So, sir, revenue position, fiscal room that is available, and also responding to the need are all characters of, or characters which, or features which infuse the confidence with which you come with a supplementary demand. And that is what I am also now hoping, that because of the buoyancy of revenue, the room to operate that I have, and also because I need to respond to situations which are developing in the ground, we are doing this. So I want just this to be
kept in mind. So, if that is the way it is, the first concern which most members spoke about is about this budgetary problem coming with a supplementary demand. Will you be able to contain fiscal deficit? So that is the first issue, which beyond that, sir, the issues for which there's been a lot of concern are, of course, inflation, talking about rupee depreciation, unemployment, fishermen, coastal communities, and also about fellowships which are not being given to the minority community. Broadly, but I will go by the issues and yes, I'm beginning with it. Sir, in the budget estimate for Manrega, we had given 73,000 crores. Now, with the supplementary demand for grants, we are coming up with 16,400 more. So, 16,400 crores now, sir. Here, there is now very obviously a declining demand for jobs in the rural areas. In the rural areas, the demand for Manrega in the recent past has been coming down. However, 73,000 in the BE and also 16,400 now. It is not coming down. People are not having the opportunity of doing jobs. Manrega is a demand-driven program, sir. Demand-driven. And if demand doesn't come, should I read it as it's going up? That's a different issue. I'm answering that also. When demand is demand, I'm talking about demand. When it is not being honored because you have some other issue, I will talk about that as well. But there is a declining trend in the demand-driven. All right. Okay. Sir, I will have to listen to everything that they say, but when I say something, if they have an objection, they can always ask me later. But they can't go on continuously disrupting my answers, sir. माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दे रहे हैं, जब आप बीच में डिस्टरबेंस नहीं करें, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सभी माननीय सदस्य को दिया। और माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, मैंने उनको अलाउ नहीं किया है, आप उनकी बात का जवाब ही नहीं दें। आप तो अपनी बात का जवाब दें, जब मैं कहूं उनको बोलने की जब आप जवाब दें। Sir, other than the fact that Manrega, we provide this much, we provide that much, concerns have been raised by particularly members coming from West Bengal about how we have not honored their bills. Sir, and Manrega funds to West Bengal has been put on the hold since March 2022 because of complaints which were received from various people. Now, as per the Manrega Act, the central government, upon receiving these complaints, shall keep the release of funds on hold till necessary explanation is received from the concerned state. It's a different story, and I'm not relying on that the newspapers are complaining about misuse and so on. I'm not referring to that. But complaints have received, we've sent it to the state government saying, can you please explain it? The amounts I can read by the states, list of states who have to get their Manrega funds. Sir, all these issues have been discussed. I'm coming. I was physically present when Mr. Sudipto Bandyopadhyaya spoke. I've heard every bit of what you've said. Let me answer, sir. Like, I go by your guidance that you have not asked him to speak. So as per Manrega Act, the central government, upon receiving complaints, shall hold the funds from getting released. All issues have been cleared. I've not even answered, sir. Have been cleared already. Now money should go back to
This is what you said, Honourable Member, when you spoke. I heard you also. Please listen to my reply. Kindly please listen to my reply. I have not completed it. But you interrupted me already. Sir, my replies are normally prepared with the concerned department inputs. So if honourable members would kindly wait till I finish, it'll be okay. Drop of a hat? You get up at the drop of a hat, sir. Anyway, sir, so it is held. No, sir, this is disrespecting, sir. In the case of West Bengal, explanation was sought from the government. The explanation is yet to be received. Explanation from West Bengal government is yet to be received, and therefore what has to be held back is being held back. So that's, I'm putting it on. Sir, Manrega, there are other concerns also. Concerns about no, enough is not being done, enough is not being. I just want to give a comparison between the number of man days which have been created between 2006-7 to 13-14 and between 14-15 to today. Man days created in crores then was 1,660. Now, for the comparable period, it's 2,341. Funds released, therefore, is 2,13,220 crores then. It's 5,76,303 crores now. For the comparable periods, number of completed works, sir, in lakhs. 153 lakhs was completed then, and a comparable period now, it's 602 lakh of works have been completed. Sir? So that's for the Manrega. The lists of how much is pending due to lack of utilization certificate not coming here, I can always provide for whoever member who wishes to have a copy of it. Sir, I would then go to addressing one small issue. There's not much, but it was more for one particular state, but I will nevertheless say it. It is on the GST compensation cess. Particularly, Tamil Nadu raised the issue that 10,000 crores is pending for us. I would like to highlight that the only last week, sir, Tamil Nadu has sent a claim for 4,224 crores. And this is for the year 2020-2021. And that's under examination. The moment that is cleared, the money will be released. It was released only, received only last week. And the AG certified figures for 21-22, which is again the year ended in March 2022, are not yet received from the state. So I do not know where that honorable member from Tamil Nadu had 10,000 crores as claim saying you have not given us. You have given us a claim which is with the AG certificate for the year 2020-2021, which is for 4,224 crore rupees, which was received last week. But no AG certified claim has reached us for the year 21-22, that year ending March 31st, 2022. So 10,000 doesn't even add up. As it is, sir,
As it is state-wise, I just would like to highlight compensation cess. For the period of ending June 2022, Tamil Nadu balanced GST compensation, which is yet to be released, which is whether after we receive from them for 2021-22 only, we have not received yet. For 22, up to June, where every state would have to get their due, for Tamil Nadu, pending is only 1,200.6148 crore rupees. So first we need AG certificate for the year 21-22. AG certificate ke saath 2021 has been received only last week. And for the month ending June, when the compensation cess comes to an end for all states, Tamil Nadu's due is only 1,200. All put together, it's still not 10,000 crores, sir. I thought I should make that clear. Then there was a lot of concern about fiscal deficit. I certainly want to explain that a bit, sir, because that is a very important issue on which members of parliament will have to be informed. Fiscal deficit was estimated to reduce from 6.9% of GDP in the last year's RE to 6.4% of GDP in the current year's BE. This is very much in line with the government's commitment to achieve fiscal consolidation announced in the budget of 21-22. That is to reduce the fiscal deficit to a reasonable level till 25-26. So on the fiscal deficit, sir, I've given a commitment which was given earlier in the budget, and I repeat that. And the current situation also very clearly gives me that kind of a feeling that we'll be able to comply with what we have said in the budget. Sir, then Minister, quite a few honourable members raised issue about inflation. There are different points which I want to highlight here. We keep a very close watch, and I just want to highlight the fact prices of pulses, edible oils, vegetables are monitored by an informal group of ministers, and we work together. There is an interministerial committee which meets every week on agri-commodities, and we closely monitor it. The buffer stock of pulses, I know, I think it was the member of Congress from Punjab who spoke, Amar Singh ji, I think, he spoke about the buffer stock concerns. I just want to say the buffer stock of pulses has been maintained for price stabilization in 2020-21, 21-22, 22-23, and calibrated release of pulses from the buffer stock will moderate the price of pulses in the market. The import duty on masoor was brought down to 0% with effect from 26th July 2021, and that continues. And central government on 1st September 2022 decided to provide 1.5 million tons of chana to states and union territories at a discounted rate for distribution under various welfare schemes. The central government, of course, has central government on May 21st, 2022, cut the excise duty by 8 rupees on petrol and 6 per litre on diesel by cutting down the road and infrastructure cess. And due to all these policies, sir, and the steps taken, I'm glad to say we've just not been talking, we are acting. The latest data on CPI proves it. Inflation has come, and it is
now come down, and it is now in the tolerable band of the RBI. Inflation has been declining since April 2022, and it is declining further. CPI for November 2022 came down to 5.88% year-on-year, down from 6.77 in October. So I want that taken cognizance of. It's a bit difficult when parties raise question on inflation who saw double-digit inflation during the period. And that's not something which I'm imagining, sir. I'd just like to say the inflation data in November of 2013 was at 19.93%. And the earlier month in October, it was 18.19%. And when record was like this, to ask us who have worked to bring the inflation down from 6.77 in October to 5.88 in November, here the same time, 19.93 in November, October 18.19 in 2013. Now, if they are asking us to bring it down further, we'll bring it down further for common people's sake. But can they ask us? 18 and 19% inflation? double-digit रहा आपका सर, आज दोपहर 12 बजे के करीब WPI नंबर्स आया है, वो भी देखने लायक है सर. WPI इन्फ्लेशन comes to 21 months में सबसे लोएस्ट में आया है. 5.85% year on year, November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. So, inflation management or inflation control, Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. Sir, the other main issue on which many members spoke was about the depreciation of the Indian rupee. Depreciation of Indian rupee, and they kept mocking at me, saying, oh, no, you don't understand, rupee is not weakening. It is a matter of fact. Every report has told you that Indian rupee against every other currency has only strengthened. Yes. And against the dollar, we have performed much better than many other emerging market economies. I will detail out the information. So, if you have patience, sir, kindly, I seek your indulgence so that I can read the numbers out for members to benefit from. It is not off the cuff that I keep saying things. It is a truth about the Indian rupee, and that has to be appreciated rather than, oh, no, Indian rupee is this, oh, no, Indian rupee is that. Sir, Indian rupee, movement of all currencies of various emerging markets against the US dollar. Sir, movement of currencies of various emerging market, and I'll read India also, emerging market economies against the US dollar. And this is over a period April 1st to 30th November 2022, this year, this financial year. Sir, Turkish lira, 21.2% depreciation.
against the US dollar. Japanese yen, 11.9% depreciation against the US dollar. South African rand, 15.1% against the dollar. Chinese renminbi, 10.6% against the dollar depreciation. Indonesian rupiah, 8.75% depreciation against the US dollar. Brazilian real, 8.7%. Filipino peso, 8.5%. We are fifth largest economy. I'm coming, sir. You are boasting of India is a fifth largest economy. South Korean won, 8.1%. Taiwanese dollar, 7.3% depreciation. Indian rupees, 6.9% only compared to the rest of it. Thai baht, only. Don't reduce yourself to a part of ridicule. Only Thai baht 5.7% and Malaysian ringgit 5.4%. So I want to talk about emerging markets is what I'm giving. We'll talk about the rest as well. But even this, when I'm giving data from the RBI, no, we are not willing to accept. I'm not giving my data. It is given by the RBI. Now, rupee movement against other currencies. Yes, I'm coming. I'm coming. The size of the appreciation. The size of Indian rupees appreciation during April-November 2022, sir, compared to April-November 2021 was 15.3% with respect to Japanese yen, 7.6% compared to the pound sterling, and 7.5% with respect to the euro. Sir, pound, euro, wo bhi aa gaya, sir. So, as regards currency, and I'm not taking a random 1 month, sir, April 1st, 2020, 22-23, this financial year's beginning, and data given is up to November. And this is Reserve Bank data and not mine. Sir, there was this question, and I think it was it's about the asset quality review, NPAs. Quite a few members did speak about it. I just want to show that after undertaking the asset quality review in 2015, of course, we followed the 4R principle of getting the banks back to order and restoring the health. The 4 Rs were to recognize that there is a problem with an account and recognize there's a problem totally put together for the bank for the number of NPAs that is there in their balance sheet, and therefore then to recapitalize them and help the recovery process, and then reform the bank itself so that it doesn't function on phone banking. You know, kahin se phone aa gaya, mera damad ko do, mera bhatija ko do, wo sab nahi hone dena. Wo reform we have undertaken after 2015. As a result, immediately after undertaking the asset quality review in 2015, नहीं आपके, इसीलिए उनके आपके कार्यकाल में वो पैसा दिया गया, हम उनको पकड़ करके पैसा वापस ले आ रहे हैं। रिश्तेदार आपका है, आपके रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार है, हमारा नहीं। आपने दिया, उसको हमने वापस पकड़ कर ले आ रहे। So, AQR, asset quality review. Sir, asset quality review 2015 में शुरू हुआ। उसके तुरंत बाद लगातार एनपीए का रिकॉग्निशन होते रहा
And as a result, between 15, 16 and 17, numbers of NPAs were increasing. This became an NPA, that became an NPA. Recognition of accounts which were becoming NPA were all under the asset quality review happening. As a result, in 2015, the gross NPA ratio was at 4.97%, which became 9.27%. It even went up to 11.66% in 2017. But after that, because of the action taken by Prime Minister Modi's government, the number started coming down. It became, in 2018, it reached a peak of 14.58%, sir. But after that, 11.59. क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? जैसे आप राइट ऑफ करते ही नहीं समझाओ आप करते ही नहीं आप करते ही नहीं आपने करा ही नहीं क्या आपने आप कोई जवाब मत दो, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं. 2019, sir. Sir, the number started coming down, 11.59%, then it became 10.25%, then it became 9.11% in 21. In 22, as of March 22, it is 7.28% only. So the gross NPA numbers are coming down drastically. Not only that, we are pursuing every NPA account, which even if they are there in this country or anywhere else, and making sure that their assets are auctioned through the court process and banks are getting the money back. So NPA handling, we have handled much better, is what I want to tell you. So then capital expenditure was a concern. I want to state the facts. We, in both the budgets in 21-22 and 22-23 budget, we have 21-22 budget, we have given a capital outlay which was improved in the 22-23 budget to 7.5 lakh crores. Now we have achieved at least nearly 45% of it. On the BE, 54.5% has been touched in the first half year. There were also a provision given for state assistance, special assistance to the state for capital expenditure, which was a 50-year kind of a loan without interest for states so that they can spend on capital assets. I'm glad to say that even there, nearly 74% has been Nearly 74% has been utilized by the states, sir. Yes, I can give you that figure exactly. So 76,268.31 crores have received approval. That special assistance which was given for capital expenditure for states without interest for 50 years, 76,268 has received approval. The others will be considered in the near future. So I'm confident that that 1 lakh crore will be utilized by all the states for capital expenditure at their, in their list of priorities. So I remember Member Shashi Tharoor speaking about this country, particularly Kerala, has a lot of fishermen. Nothing is happening about them. So I would like to differ. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a scheme through which 20,000 crores for 5-year period has been given, and this is already on course. States have started giving proposals. And in this, how traditional fishermen, small fishermen,
and their concerns are being taken care of by this government is better, very well explained by two things. One, I will quote Minister Rupala's tweets. I don't know if he's here. He came up with complete details of how small fishermen and fishermen are benefiting from the government schemes. Those tweets are there for me. I will re-quote them. Other than that, the extent to which in the World Trade Organization, our Commerce Minister has been literally fighting for the rights of traditional small fishermen against this unlicensed, unreported, illegal fishing with deep trawlers coming to our sea coast. So in both international forums and in the domestic, the way in which we are taking the fishermen's cause to give them KCC card, to give them greater bank assistance and so on, I just would come up with what Minister Rupala has said. Sir, 1950-51, before I quote Minister Rupala, 1950-51, the total production of inland fisheries and aquaculture was at 2.18 lakh tons, which increased to 61.36 lakh tons in 13-14, which took about 65 years, but never mind, it took 65 years, we were able to reach 61.36 lakh tons. But I'm happy to say that India has achieved 121.21 lakh tons of total production in 21-22, double than what it was in 2014. Data speaks for itself, sir. So without government intervention, this kind of support and production wouldn't happen. But however, now I say, this is a tweet from Purushottam Rupala, the minister. He said this, that I'm happy to state that India achieved 121.21 lakh tons of total production in 21-22, double than in 2014. That was one quote. He also said, we have extended the benefit of Kisan credit card to fishermen and workforce involved in animal husbandry and in dairying, which was earlier available only to farmers. So 25.81 lakh Kisan credit cards have been sanctioned to animal husbandry. This data is as of December 2022. Yes. Animal husbandry, dairy, fishery farmers, and a credit limit of 21,322 crores has been given for fishermen, animal husbandry, and for farmers. Sir, Matsya Sampada Yojana, under the PMMSY, over a span of 5 years, sir, 2020 to 2025, investment worth 20,050 crore have been envisaged for the fisheries, which sector happens to be the highest ever investment. Fisheries sector happens to get the highest ever investment till date in this sector. Then, sir, projects to the tune of 11,029.36 crores has been achieved and has been sanctioned, with a few which will generate lakhs of employment in opportunity. So that is about fisheries, what we are doing. सभी माननीय सदस्यों को ये जानकारी होनी चाहिए। आप माननीय मंत्री जी की जगह आप स्पीकर जब अलाउ करेंगे ना, जब मंत्री जी जवाब देंगे। ये मत्स्यकारों को कुछ नहीं मिला, बोले जवाब नहीं मिला। पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ही मिल गया, फिर भी पूछे प्रश्न। 20,000 करोड़ दिया। हाँ, sir, there was this question that I'm not sure if the honorable member Hanuman Beniwal ji is here, but he raised this issue
saying बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स को आपने खत्म कर दिया रूरल में वगैरह. So I just want to say, sir, it's not being said now, and I'll be happy to show the reference in the expenditure profile, which is given along with the budget. Expenditure profile document, which is always given along with the budget statement. On 1st February 2022, a statement 4AA was given, which very clearly shows that the schemes have not been closed down, as stated by the honourable member. Instead, they have been rationalized in order to make them more focused and to bring administrative efficiency. This is a recommendation of the 14th and the 15th Finance Commission, and that is exactly what we have followed. So, I'm just showing what was given during the budget statement, sir, expenditure profile. Just to explain my point, I want to say, take for example, Department of Agriculture, Information Technology related, Integrated Scheme for Agriculture Census and Statistics, Integrated Scheme for Agriculture Marketing. Like that, there are 10 schemes. They've all been rationalized to come under Krishi Unnati Yojana. They've not been closed down. They've all just been made into sharp focus under one. Similarly, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Soil Health and Fertility National Project, Krishi Vikas Yojana, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Rainfed Area Development and Climate Change. Again, a series of 10 of these programs have come under Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Like that, 130 schemes, all of which are here, they've all been listed out in the expenditure profile. 130 schemes are now clubbed together into 65 schemes, and none of them have been shut. Koi band nahi hua. 103 schemes abhi 65 schemes mein hi condensed kiya gaya hai. Uska list मैं अब नहीं दे रही हूं, बजट के समय ही दे चुकी हूं, 1 फरवरी 2022 का बजट में. सो हनुमान बेनीवाल जी को प्लीज इस इंफॉर्मेशन पहुंचाइए. हमने किसी स्कीम को बंद नहीं किया, ऊपर से उनका ज्यादा फोकस के लिए नाम भी नहीं बदला सर. Sir, there was this concern about fellowships for minority community. Sir, if you don't mind, Danish Ali ji, ab zara suniye na, aapke विषय में आ रही हूँ. So Maulana Azad scholarships for minorities has been discontinued. Was a question which many members, honourable members, raised. I just want to underline what the position is, sir. There are several schemes which cover many SCs, STs, OBCs, minorities, and so on. The Maulana Azad National Fellowship Scheme was overlapping with many of the above said schemes. I have not read it out. The list is there, the schemes, where it was overlapping. So all the existing candidates, I just want to repeat this, sir, all the existing candidates under the Maulana Azad National Fellowship Scheme as of 31st March 2022 will continue to receive their fellowship till the end of their tenure. So किसी का बंद नहीं हो रही है. जिनको 31st March, अरे 31/3/2022 तक जिनको उनको मिल रहा है. Further, Canara Bank has been the implementing agency for the scheme, and they have been directed to send an email to each and existing eligible beneficiary that they will continue to get these benefits, dues or subjects to the compliance to the extent guidelines. So on that, sir, let us be clear. Sir, there's also this issue which has been raised on the PM Kisan and doubling of farmers' income.
questions have been raised, sir, on that. I just want to underline that unprecedented enhancement in budget allocation has happened. Agriculture Minister is sitting next to me. I will certainly get corrected if I'm wrong. In the year 2015-16, the budget allocation for Ministry of Agriculture and Farmer Welfare was only 25,460 crores, whereas this year it has increased. This time it has increased by more than 5.44%. And the total amount, which in 2015 was only 25,000 crores, now it is 1,38,550.93 crores. That is the budget estimate. Sir, income support किसानों के लिए आए, income support was launched in 2019. The PM Kisan Samman Nidhi was launched in 2019 for an income support to be provided 6,000 rupees per year in 3 equal installments. More than 2 lakh crores has been released so far to all the farmers. Sir, institutional credit for agriculture sector. Benefit for concessional institutional credit through Kisan credit card at 4% interest per annum. Sirf 4% interest per annum is now extended to animal husbandry, fisheries farmers, and also for meeting their short-term credit requirements. Special drive, and I know for this for sure, banks undertook a special drive in February 2020 to provide concessional institutional credit with focus on covering all the PM Kisan beneficiaries through Kisan credit card. As on 11/11/2022, 376.97 lakh new KCC applications have been sanctioned with a sanctioned credit limit of 4,33,426 crores. Sir, minimum support price, on which a lot of questions. I want to just come and before I do that, sir, Sir, I'm just taking my data out, sir. आपस में चर्चा न करें और माननीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप भी बैंक ऑफ इंडिया स्टडी has very clearly said that farmers' income is doubling on very many scores, such as soya farmers and others. Their income is doubling, and when plantation crops are being sowed, farmers benefit. Also, on the minimum support price, government has increased the MSP for all mandated Kharif and Rabi crops and other commercial crops as well, with a return of at least 50% over all India weighted average cost of production from 2018-19, sir. So on MSP, I know
the minister next to me has been working a lot, and we are now giving 50% over the weighted average cost of production since 2018-19. Paddy MSP for common paddy, sir, it has increased to 2040 per quintal in 2022-23, and it has risen from, it has increased from 1,310, which was the amount in 2013-14. Again, 2014, in input cost. Sir, when inflation was double-digit in 2013-14, you can imagine what was the input cost. Even then, they gave only this much. MSP for wheat was 1,400 per quintal in 13-14. It went to 2,125 per quintal in 2022-23, sir. So I'm almost coming to the end of the responses. There are one or two points which are very, very important, which I want to highlight. There was this concern for BSNL, sir. Quite a few members had voiced concern for BSNL and the monies being given to them. I just want to highlight, sir. Sir, the supplementary demand, which is now on the table of the House, for BSNL, the supplementary demand requires 18,127 crores for viability gap funding for BSNL for the rural wireline operations. So we are giving 18,000 subject to House approving, 18,127. 49.37 crore for champion sector schemes of BSNL. Also for research and development, 130 crores. All this is part of this supplementary demand. Further, 30,156 crore allocation for 900 megahertz spectrum, again for BSNL. Equity infusion into BSNL for capital expenditure, 3,013 crore. And restructuring of MTNL, 1,600 crores. And also reissue of 9% non-cumulative preferential shares for 7,500 crores. All these put together, of course, there are some token allocations being made from one head to another within the telecommunications heads. All this put together, BSNL gets 60,575. And there was an honorable member who told me and reminded me, you went abroad and said, we will, if necessary, give 5G to all or whoever wants it, give something for the BSNL. This supplementary demand gives this much, 60,000 for BSNL, for these specific heads. So, and this is stated. I only wish the honorable member saw what was the demand for grants, which is on this table now. Therefore, you will give everything for the world, not anything for our BSNL. No, we are giving for BSNL also. And sir, therefore, आप अधीर रंजन जी की टक्कर में मत आओ, बैठ जाओ। Sir, because, Manya Speaker, sir, now because people will want to get into details of, we are letting down BSNL, you have not done this for BSNL. These are people who are asking us questions who did not even give money for BSNL 4G. Professor is asking me today, BSNL ko, sir, capital approval in 2019-20 budget, Prime Minister Modi coming back to power, first thing he did was to bring in 54,021 crore. And for what? For BSNL. And for what? Because in 2019-20, sir,
Pensionary benefits wanted 12,768 crore. Ex gratia given 17,169 crore. Capital infusion for 4G spectrum, which did not happen during UPA time. They denied it. BSNL was on the verge of death. Prime Minister Modi revived it by giving capital infusion for 4G spectrum for BSNL, 20,410 crores. Grant for GST-related matters, 3,674. So, in 2019-20, 54,000 crores was given for BSNL. Now, through this supplementary demand for grants, I am giving 60,575 for BSNL. BSNL gets its due recognition and infusion of monies, which was denied over a period. In fact, at one night, overnight, MTNL was asked to pay for something, after which a cash-rich company became cash negative. And that was UPA government's attention for both BSNL and MTNL. So, Adhir Ranjan ji should be informed about it, sir. I am well informed. So, you should learn from the past experiences. Yes, from your mistakes. We should learn from your mistakes. Sir, BSNL आप इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं करते क्योंकि सिग्नल नहीं आते। ये हालत हो गई यार। BSNL गरीब लोगों के लिए और बाकी सारे एलिट लोगों के लिए। लूटने वाले काम को छोड़ करके माननीय मंत्री BSNL ने कितने लोगों को नौकरी दिया? लूटने वाले के साथ बैठे हो। अरे जियो किसने दिया? जियो लूट रहे। जियो किसने दिया? सारे स्पेक्ट्रम किसने दिया? किसको दिया? अब BSNL MTNL को मिला है सुविधा है यार। Sir, about 4G and 5G related matter on the BSNL, sir. In July 2022, the government approved a revival package for BSNL amounting to 1.64 lakh crores. So BSNL gets its funds and the entire 4G stack, financial support by giving financial support for capex for BSNL. It means that we are making BSNL deploy Atmanirbhar 4G technology and the 4G technology stack. That itself, the projected capital expenditure for BSNL for the next 4 years, government will fund capex to the extent of 22,471 crores for BSNL only, so that their capital infrastructure spending will be good, and this will be a big boost for development and deployment of Atmanirbhar 4G technology, which of course is going to be the foundation on which 5G will get built up. You didn't do 4G, we are doing 4G, and therefore we are giving all the necessary fundamental infrastructure for it. आपने पैसा नहीं दिया ना, इसीलिए नहीं था। 2G में क्या किया? 2G में क्या किया? 2G में लूट लिया। 2G में लूट लिया। सर, अंतिम पॉइंट सर, खत्म कर रही हूँ बिल्कुल। हो गया, सब बता दिया। Sir, talking about macroeconomy, economic fundamentals and so on, Honorable Member Mahua Moitra said about where one should find Pappu, who's the Pappu, where's the Pappu and so on. Actually, either West Bengal in the... Sorry? So, all the fundamental, macroeconomic fundamentals being questioned. There was this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only Honorable Member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt, where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. माचिस किसके हाथ में है? This is really
I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the concerned leader. We don't need to undermine the people by saying किसने दिया इनके हाथ में, जनता ने दिया मैचेस, but किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट. मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया. Recently you had, at least BJP had a fantastic victory in Gujarat. Post election, sir, what was the environment there? Peacefully, the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post the state government election, marches किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है. पूरा बंगाल को दिला दिया इन्होंने. माचिस किसके हाथ में? हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए. जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया, और ऊपर से एक केंद्र मंत्री एमओएस मुरलीधरन, उनके गाड़ी के ऊपर इतना अटैक हुआ, सेंट्रल मंत्री तक सेफ नहीं था पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस, जेपी नड्डा जी की गाड़ी तो कैंपेन के दौरान, मुरली जी की गाड़ी, एमओएस के गाड़ी पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस किसके हाथ में कैसे काम आया वो हम समझना चाहिए सर, ऐसे नहीं है बात. सर लास्टली सर, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर आदिर जी बात करते हैं रेपो रेट. मैं तो, मेरा कर्तव्य सर लीडर को जवाब देना, उससे मैं बंद करती हूँ मेरा. सॉरी, मेरा गलती है सर, सॉरी. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, मगर आदिर रंजन जी हमारे लीडर है, इसीलिए. सर रेपो रेट बहुत हाई है, इट इज इम्पैक्टिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये है उनकी कंसर्न. और उसके सामने, उससे पहले ये भी बताया गया, इंडिया इज विटनेसिंग स्टैगफ्लेशन. मैं बहुत ही हम्बली सबमिट करना चाह रही हूँ सर. लीडर है, बहुत वरिष्ठ है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, और बंगाल में बहुत ही बड़ा है. सो आई हम्बली वांट टू सबमिट सर. हम्बली वांट टू से सर, स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है और हाई इन्फ्लेशन भी है, वो है स्टैगफ्लेशन. भारत में आज डेटा आया, कल भी डेटा आया, मैंने बोल रही हूँ सीपीआई 5.88 के नीचे आ गया है, डब्ल्यूपीआई तो 21 मंथ्स में सबसे कम में आ गया है. सो इन्फ्लेशन हाई नहीं है, वो एक बात है. सेकेंड, स्लो डाउन नहीं है भैया, पूरे हमारे देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सर, कैसे स्लो डाउन. सो स्टैगफ्लेशन के बाद जो आदिर जी उठाया वो बिल्कुल सही नहीं है. फास्टेस्ट ग्रोइंग, नो इन्फ्लेशन, लोअर इन्फ्लेशन विद इन द फोरबेरेंस लिमिट इन्फ्लेशन. सो ये एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ. लास्ट में सर रेपो रेट, उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं. रेपो रेट हैज बीन वेरी हाई, हिस्टोरिकली हाई ड्यूरिंग यूपीए 1 एंड यूपीए 2. ये हम रिकॉग्नाइज, हाँ, नहीं, मेरा जमाना के बात ही कर रही हूँ, सुन लो, सुनिए. सर हाँ, जरूर, क्यों नहीं. आप सर
आदिर जी 1 मिनट पहले हमसे ये बात बोले कि आप सीख लेना चाहिए, उनसे मैं सीख रही हूं सर। और उनके रिपो रेट 8% था ड्यूरिंग 2014, अभी 6.25% है सर रिपो रेट। तब तो 8% था, अभी 6.25 है। 28% हायर रेट्स वर देयर ड्यूरिंग यूपीए। दूसरा, होम लोन रेट्स were 10% today, whereas it was उनके समय पर, today it is only 8.40। रिपो रेट के ऊपर चिंता ना करें आदिर जी। आपके सारे मेंबर चिंता ठीक कर है रही है। सर, नहीं उसका जवाब मैं दे चुके सर। के बारे में जरूर चिंता करते हैं। आप किसी बाहर वाले को बेकार छोटे मध्यम उद्योगपति को पूछ लीजिए, छोटे छोटे बैंक से जो लोन लेके काम करता है पूछ लीजिए, कोई सरकार जिन्होंने अपना मकान बनाया बैंक से उधार करके पूछ लीजिए। ठीक है सर। लास्ट वन लाइन सर, चाइना के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बहुत सारे लोग चिंता जताए, उसमें मैं बात बोलना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 2004-05 में 1.48 बिलियन ही था, और वो 2013-14 के अंदर 36.21 बिलियन US डॉलर्स हुआ, विच इज 2000% से ज्यादा इंक्रीज हुआ तक। मगर अब trade deficit with China has only increased by about 100%, which is 73.31 billion in 21-22। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के खिलाफ का वाले बात भी मैं डेटा के साथ आपके सामने ही रखना चाह रही हूँ। मुझे जवाब देने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बेच सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 33, 35 से 37, 43 से 56, 58 से 63, 65, 68, 66, 71, 72, 74, 76 से 79, 85 से 89, 91, 93, 95 से 98 और 100 से 112 सामने दर्शाए गए मार्ग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाली खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। वर्ष 22-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बेच पारित हुई। अब मैं वर्ष 2019 और 20 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची में स्तंभ 2 से दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 22, 20 और 31 के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 21, माननीय वित्त मंत्री जी। Payments and appropriation of certain further sums
from and out of the Consolidated Fund of India for the services of financial year 22-23. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Introduce the bill, sir. आइटम नंबर 25, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 25। सर 22-23 नहीं किया है। आगे आएगी, आगे आइटम नंबर 22। आइटम एक मिनट, 22 आइटम नंबर 22। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 22-23 be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के प्रश्न हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित करें। This is item number 23. Will be passed. Will be passed. Sir, I introduce. No, I stand to request the bill be. I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 23। Move for leave to introduce a bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March 2020 in excess of the amounts granted for those services and for that year. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय मंत्री जी आइटम नंबर 24। Sir, I rise to move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March 2020 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडार विचार करेगी। प्रश्न है खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेगी विधेयक को पारित किया जाए।
Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। 377 श्री मनोज राजौरिया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि नेशनल हाईवे से संबंधित है वो आपकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, 14 अक्टूबर 2016 को करौली जिले में माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा एक नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी, जो कि मेरे करौली जिले के जिला मुख्यालय जो कि मदन मोहन जी की नगरी है और कैला देवी जो कि लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है, इस रोड को आगरा से जगनेर, जगनेर से बसेड़ी, बसेड़ी से मासलपुर, मासलपुर से करौली, करौली से कैला देवी, सपोटरा, सपोटरा से जीरोता, हाड़ौती और सवाई माधोपुर रणथंभौर तक एक सड़क जोड़कर नेशनल हाईवे बनाने की मांग थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस नेशनल हाईवे से न सिर्फ करौली जिले के बल्कि धौलपुर और आसपास के 50-60 जिलों को इसको जोड़ने की 50-60 जिलों के लाखों श्रद्धालुओं को इस नेशनल हाईवे से लाभ मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह है कि कृपया उक्त रोड को नेशनल हाईवे बनाने की कृपा करें और शीघ्रता से इसका कार्य शुरू करें। धन्यवाद। Honorable Member Sri Satyadev Pachauri ji. Yes, please. Please. Arif ji. Hasan Masoud ji. Please. Sit down, sit down. Sudeep ji. सड़क परिवहन एवं सुदीप बंदोपाध्याय जी जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर में NH 91 जो रामा देवी से शहर के बीचों में गुजरता है पर लगने वाली जाम की समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। शैलेंद्र बाबू जी, रामा देवी चौराहे से गोल चौराहे तक करीब 10 किलोमीटर GT रोड पर जाम की समस्या बनी रहती है, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में इस GT रोड को 1000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, परंतु यह प्रस्ताव अभी तक लंबित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से यातायात अवरुद्ध होने के कारण मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, स्कूल के बच्चे कॉलेज नहीं पहुंच पाते, व्यापारी अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाते। अब इस जाम से वायु गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। कानपुर में बढ़ती आबादी को देखते हुए यातायात को सुगम बनाए जाने के लिए जनहित में इस एलिवेटेड GT रोड रामा देवी चौराहे से गोल चौराहे तक का निर्माण अति आवश्यक है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त एलिवेटेड GT रोड का निर्माण कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देश कर कानपुर की जनता को अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो उत्तर भारत में हवा की क्वालिटी जो खराब हो रही है उसके बारे में मैं आपको उठाना चाहता हूं। पूरे उत्तर भारत में जैसे ठंड की शुरुआत होती है तो न केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि मेरे गृह प्रदेश बिहार में भी हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। पहली बार हमारी सरकार ने बिहार में जब हमारे पर्यावरण मंत्री थे तो हमने सब जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मशीनें लगवाई और इस बार के विंटर्स में सबसे खराब, यहाँ तक कि मेरा जो होम टाउन है बेतिया शहर,
उसकी भी एक दिन सबसे ज़्यादा खराब एयर क्वालिटी थी। या हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हमारे यहाँ गैसेस नहीं है, जो 2.5 ppm का तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पर डेंजरस गैसेस नहीं है। पर मेरा आप अनुरोध रहेगा कि केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों के राज्य सरकारें मिल करके एयर क्वालिटी हर प्रदेश में ठीक हो। यह केवल पर्यावरण का मामला नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य का भी मामला है, क्योंकि अगर हवा खराब रहेगी तो यह डेटा है कि दिल्ली में 60% बच्चों का जो वाइटल कैपेसिटी होता है लंग का, वह कमजोर हो गया है। तो इस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में समन्वय स्थापित करके पूरे देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहे, इसकी चिंता करें। यही अनुरोध आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल कसवन जी। भारत सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के साथ ही साथ झुंझुनू के एक जिले के 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किए जाने के लिए व आमजन को पीने के पानी की सुविधाओं के लिए यमुना के जल को ताजेवाला हेड से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराए जाने हेतु यमुना जल योजना का कार्य शुरू किया गया था, जिसके तहत केंद्रीय जल आयोग के द्वारा तत्कालीन राजस्थान सरकार को डीपीआर बनाए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाकर तुरंत प्रभाव से डीपीआर केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु भिजवाई जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक उक्त डीपीआर की स्वीकृति की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यह योजना क्षेत्र के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ झुंझुनू व सीकर जिले में आमजन को भी पीने का पानी की सुविधा के साथ साथ क्षेत्र के लिए लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर कृषि का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है। अगर यह योजना स्वीकृत की जाती है तो हमारे असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को बाध्य कर जल्द से जल्द जो डीपीआर 22,000 करोड़ की बनी थी, उसके अंदर 10 to 15% की राशि उनको देनी थी और वो उनको स्वीकृति प्रदान करे ताकि ये परियोजना चालू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती केशरी देवी पटेल। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर प्रयागराज जनपद की स्वाधीनता आंदोलन में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाया है। हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि केवल देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रयागराज जनपद विविधता, योग्यता, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति तथा राजनीतिक एवं सामाजिकता का एक संगम रहा है। मानव मेरा इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट को और उसी से जुड़े हुए सेना क्षेत्र के किले में एक वट वृक्ष है जिसे अक्षयवट के नाम से जाना जाता है, जो हमारी भारतीय विरासत का एक उत्कृष्ट और अद्भुत प्रमाण है। वह सेना के आधिपत्य में किले के अंदर है। मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद व आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने उपरोक्त अक्षयवट वृक्ष जिस पर पूरे देशवासियों की श्रद्धा है उसको स्वयं आकर आम जनमानस के दर्शन हेतु सुलभ कराया है। हम संक्षेप में निवेदन करना चाहते हैं कि हम जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं वह एक अक्षयवट ऐसी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है जो पूरी दुनिया में जनपद प्रयागराज को एक बहुत बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। हजारों एकड़ जमीन और एक किला जो संगम तट पर है और सैन्य भूमि के रूप में है। हर वर्ष वहाँ जनवरी फरवरी माह में पूरी मानवता का भव्य समागम होता है। प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेला, 6 वर्ष पर होने वाले अर्ध कुंभ एवं 12 वर्ष पर होने वाले महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। इस स्थान को सेना के नियंत्रण से हटाकर धार्मिक गतिविधियों एवं पर्यटन स्थल के रूप में इसका भू उपयोग करने की कृपा करें। गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए भी मेरा अनुरोध है। किले को आगरा के किले की तरह सेना के आधिपत्य से हटाकर आम जनता को सुलभ करा दिया जाए ताकि उस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री बेनी बेगनान। Thank you, Mr. Chairman. Sir, the main railway station in my constituencies are Alwai, Angamali, Chalakudi. These are all nearby stations to the international airport, Cochin International Airport.
and this station have about 50,000 to 20,000 passengers on a daily basis. But unfortunately, none of the stations have basic amenities. Sir, Alway railway station is connected to the second largest commercially important town to Alway. And in the railway map, it is the gateway to the eastern side of Kerala, and one of the oldest railway station. And the migrants' labours are mostly depends upon this railway station. But unfortunately, this railway station has only one entrance. So we had a proposal for the western entrance of the station and the multi-purpose parking space. Even though this is a very old railway station, many of the major trains had no stoppage there, like Kannur Trivandrum Janashatabdi Express, Chennai Trivandrum Superfast Express, Ernakulam Shalimar Express. Another railway station is Angamali railway station, which is only 10 kilometers from this international airline. It is having a level crossing across the platform, and it is creating very difficulties there. And after the COVID, many of the stoppage of the main train is cancelled there. That is Mangalore Trivandrum, Maveli Express, Tirunelveli Palakkad, Palarvi Express, and Madurai Amarda Express. And another station is the Chalakkudi railway station, which had a footfall at near about 8,000 people there. And it is also very near to this big tourist area like this Adirapalli. And like the Angamali station, after the COVID, many main important trains have stopped the stoppage, like Tirunelveli Palakkad, Palarvi Express, and the Kannur Trivandrum Janashatabdi Express. So, and one thing, even though these stations had more than four platforms, most of them has no roofing. So my humble submission that all the railway stations require a roofing on the platform, and please allow all the trains which are after the COVID, the major trains are stopped there. Please allow all the trains and exit. Thank you. Thank you. Honourable Member, Advocate Dean Kuriakos. Respected Sir, since the inception of 17th Lok Sabha, I have been attempting to draw the attention of the government on depressing trends in the price of agricultural products like natural rubber, cardamom, pepper, etc. Now the market recorded a sudden drop in rubber and cardamom prices. This was arisen at such time when the small and marginal farmers looked forward to a steady market during the Christmas festival season. The rubber farmers were making it even with prices staying steady around rupees 200 per kg, but it has now dropped to a low of rupees 150 per kg. Sir, the cardamom farmers are also going through the same situation. Presently, the price of cardamom is below rupees 800 per kg in the local market, and it touched to rupees 7,000 kg in August 2019. The major reason for this to happen is the low demand of natural rubber and cardamom in domestic market, as well as the unconditional import of these items from the ASEAN countries. So the production cost, including labor, fertilizers, etc., have increased heavily in the last few years. If the low price situation continues, the farmers will be compelled to stop its cultivation, which will affect the agrarian economy of Kerala. Hence, it is important to provide minimum support price to natural rubber and cardamom. Sir, I urge upon the government to announce MSP of rupees 250 per kg to rubber and 2,000 per kg to cardamom. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Sri Saptagiri Shankarulka. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on a very important issue under Rule 377. Sir, after the implementation of Direct Benefit Transfer, DBT, for National Social Assistance Program, NSAP, and Madhubabu Pension Yojana, MBPY, for pension in the state, sir, it has created havoc in many places in Raigada and Koraput districts, causing inconveniences to thousands of pensioners and vulnerable people, especially the elderly in rural areas. Sir, around 4,376 Gram Panchayats in Odisha have no banking facilities. Even existing banks are unable to bear the burden of large number of pensioners due to acute staff shortage. Odisha has been disbursing pension in cash on 15th of every month at the Gram Panchayat level and urban local body headquarters. Previously, beneficiaries in rural areas could opt out to receive their payments in cash until adequate banking infrastructure is set up in proximity to the Gram Panchayats.
the situation on the ground has not changed much, but Odisha government has now implemented direct benefit transfer for pension. Sir, recent visits to Borgi, Kumari, Langalbeda, Naranpatna, Boriguma, Nilabadi in Koraput districts reconfirmed the miseries by listening to the grievances of the people. I would request the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, to kindly look into the matter and allow disbursing pension in cash to mitigate the sufferings of the people till adequate banking facilities are made available in remote areas, especially the tribal areas. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity. Shyam Kumar. Honorable Member Sri Dhanisham Kumar. Absent. Honorable Member Srimati Chinda Anuradha ji. Not present. Honorable Member Sri K. Raghuram Krishnaraj ji. Thank you, Chairman, sir. This is to the Education Minister. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Education for establishment of a new Kendriya Vidyalaya in Narsapuram Lok Sabha constituency of Andhra Pradesh, which is my constituency. Subsequent to the recent restructuring of districts in accordance to the parliamentary constituency wise, our district, now it is named as West Godavari district, covering the Narsapuram parliamentary constituency, headquarters as Bhimavaram to the newly formed district, West Godavari. Over 1,250 Kendriya Vidyalaya schools are there in almost all districts in the country. But there is no Kendriya Vidyalaya in our district as of now. It is a well-developed area with an aqua export of over 15,000 crore from my district alone, newly formed district alone. Many central government institutions have already been located and many more are coming up. There is a huge demand for Kendriya Vidyalaya school in Bhimavaram area to cater to the needs of the students of central government employees, which is the primary criteria for setting up of a Kendriya Vidyalaya, and also many are there who are seeking good quality education. I therefore request the Honorable Minister of Education to kindly consider setting up of a Kendriya Vidyalaya on topmost priority, and from our side we will extend whatever support that is required. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Professor Saudar Roy ji. Sir, I want to raise a very important matter under Rule 377. Very recently there were clashes between Indian and Chinese soldiers of the PLA in Tawang in Arunachal Pradesh. Chinese army is making aggressive moves along the line of actual control in Arunachal Pradesh and Sikkim and trying to alter the status quo in Ladakh and had intensified patrolling along the undemarcated eastern frontier and began reinforcing military posts and infrastructure. Chinese army, the PLA, making China illegally occupying approximately 38,000 square kilometers of Indian territory in Ladakh and Arunachal Pradesh. This increasing deployment of Chinese troops closer to the border of eastern sector is alarming. They have also been deploying additional military assets, besides showing aggressive intent and increasing patrolling. We know that 20 Indian soldiers were killed in Galwan Valley in Ladakh by the Chinese under the so-called China-Pakistan boundary agreement signed in 1963. Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory in Shakskan Valley from areas illegally occupied by Pakistan in the Indian territory of Ladakh to China. I urge upon the government to ensure urgent steps to protect and preserve the entire territory of Ladakh, Jammu and Kashmir, union territories belonging to India, and also Arunachal Pradesh, and the message should be conveyed to Pakistan and Chinese authority. India has to keep a careful and specific attention to the improvement of infrastructure in the development of border areas in order to facilitate the economic development of these areas and also to meet the country's strategic and security requirement.
the government is avoiding a discussion on the Chinese aggression in the Lok Sabha. The Raksha Mantri issued a statement and there was no discussion. We demand full discussion on the Chinese threat, Chinese occupation in the House, as was allowed by Jawaharlal Nehru after the Chinese aggression in 1962. Sir, I want a discussion in this House. No minister is present here. It's a matter of national importance. And they are avoiding discussion. No, matter you under should Rule also participate 377. Yes. in the discussion. No, already you they read are avoiding a discussion on Kashmir. Sauraji, already you read your text. Now you can see it. Honorable Member Srirangappa Barneji. Srirangappa Barneji. Nothing else is going on record. No, nothing going on record. Nothing else. No. Nothing going on. Already you read your text. 377 के अधीन Nothing going on road. Only his text. जुड़ने वाला एक महत्वपूर्ण Whatever he read, that only going. पुणे से मुंबई तक जाने वाली सिंहगढ़ एक्सप्रेस 11009, 11010 को 14/3/2020 से नए LHB को कोच में परिवर्तित किया था। इस समय सिंहगढ़ एक्सप्रेस की बोगी संख्या 19 थी, जिसे कम करके 16 बोगी की गई और नई LHB कोच में सीट संख्या 1908 से घटाकर 18 हो गई। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण 23/3/2020 से संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन के कारण सभी मेल एक्सप्रेस तथा लोकल ट्रेन सुविधा बंद की गई थी। अब सिंहगढ़ एक्सप्रेस में जनरल टिकट की सुविधा फिर से शुरू की गई है, लेकिन यह सुविधा देते समय सिंहगढ़ एक्सप्रेस की फिर से 2 बोगी घटाकर अभी सिर्फ 14 बोगी कर दी गई है, जबकि बोगी की संख्या कम होने से सीटों की संख्या भी घटकर 1300 हो गई है। इन 2 बोगी के कम होने के कारण पुणे मुंबई और मुंबई पुणे यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिंहगढ़ एक्सप्रेस सुबह पुणे से मुंबई जाने वाले पहली गाड़ी होने के कारण इसमें हजारों यात्री रोजाना पुणे मुंबई, मुंबई पुणे यात्रा करते और बोगी संख्या कम होने के कारण हजारों यात्रियों को पुणे मुंबई, मुंबई पुणे के बीच खड़े रहकर यात्रा करनी पड़ती है। इसमें छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग, कर्मचारी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मैं सरकार और रेल मंत्री से मांग करता हूं कि सिंहगढ़ एक्सप्रेस में फिर से 2 कोच बढ़ाकर 16 कोच किए जाए, जिसमें जनरल कोच से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को फिर से अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Dr. Lok Sabha ji. धन्यवाद सभापति महोदय। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों जैसे प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकताओं जैसे कार्य की अनिवार्यता, कार्य संचालन में दक्षता और मितव्ययिता तथा अपरिहार्य परिस्थितियों के आधार पर कर्मचारियों को आउटसोर्स करते हैं। संविदा पर आउटसोर्स इन सेवाओं की भर्ती जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 और मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज 2017 में किए गए उपबंधों के अनुसार की जाती है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों के अंतर्गत आउटसोर्स नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की नीति बनाने तथा उसे लागू करने की कृपा की जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। Thank you. Honorable Member Sri Chandrasekhar Sahu ji. Thank you, Chairman sir. Sir, road infrastructure plays a major role in the development as it connects major and important places. Keeping in this view,
Odisha government, our Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik, has forwarded a proposal for declaration of new national highways stretches from Palasa, Pallakemandi, Ramnaguda, Bishmakatak, Muniguda, Bhavanipatna, Khariyar, Bangamunda, Patnagar, Padmampur, Odisha, sir, with Chhattisgarh border, and submitted the same to the ministry in August 2021. The above stretches were previously declared in principle in 2015, and the ministry has also appointed DPR consultants. The development of these stretches will improve tourist flow in this region, including in my parliamentary constituency. This is also to bring to your notice that these areas are strategically significant, and better connectivity will improve in efficient handling of law and order situation. In view of the above, I request the Honorable Minister of Road, Transport and Highways to issue instructions to the concerned authorities to take action for early completion of the stretches of National Highway. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Maluk Nagarji. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रूल 377 पे बोलने का मौका दिया और जिसमें पढ़कर बोलना भी अनिवार्य है और सरकार भी जवाब देना सरकार का भी अनिवार्य है। किसानों की आय दोगुनी करने, गन्ने का रेट बढ़ाने आदि से संबंधित मुद्दे में 9 बार संसद में उठा चुका, 3 बार संसदीय समिति की बैठकों में उठा चुका, 4 बार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को चिट्ठी लिख चुका और पिछले वर्ष वित्त मंत्री जी को पत्र लिख चुका। इस तरह 17 बार उठा चुका और ये 18वीं बार आज उठा रहा हूँ। परसों भी 1 बार उठाया, 19वीं बार उठा रहा हूँ। अति शीघ्र गन्ने की खरीद का रेट के साथ साथ अन्य फसलों के रेट तुरंत बढ़ाए जाएं, मूल्य लागत के अनुपात में बढ़ाए जाएं। वे पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ और देश में लाखों करोड़ गन्ने की जो पेमेंट बकाया है उसे तुरंत दिलवाया जाए और देश की रीढ़ की हड्डी कृषि क्षेत्र को मजबूत कराया जाए और देश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी और देश के किसान खुशहाल होंगे। इसलिए तुरंत रुकी हुई पेमेंट को ब्याज के साथ तुरंत कराया जाए और दूसरे तुरंत जो भी फसलों के कहीं पर रुकी हुई है उनकी पेमेंट तुरंत दिलाई जाए। धन्यवाद। Honorable Member Dr. M.P. Abdul Samad Samadani ji. Thank you, Honorable Mr. Chairman. My submission is, sir, to draw the attention of the government to the problems faced by the people in connection with the acquisition of land for the Kozhikode-Palakkad Greenfield Highway. At present, land acquisition is being carried out in a manner that makes the living condition of the people, agriculture and social life system uncertain, and it is done without any transparency. Sir, it is done without taking into consideration even the representative of the people, without informing the people. It is decided to implement the alignment of the proposed highway by excluding residential areas, traditional places of worship, graveyards, marketplaces, and it is also suggested that they can be protected without major changes in the alignment. Sir, a special package should be formulated and implemented for those people whose land would be acquired in such a way that agricultural laborers and other economically backward people with marginal land can get reasonable financial support. Along with that, sir, a package of compensation, a package consisting compensation amount of not less than 3 times of the market value of the land should be announced for land acquisition to all those whose land is acquired. Therefore, sir, I urge upon the government to urgently consider this matter and to address these problems and proposals in order to solve the problems faced by the people who lose their land and places of habitation. Thank you, sir. Sir, here. Thank you. Members, it passes through their constituencies also, yes, sir. Yes. Honorable Member Shrimati Navneet Ravi Rana ji. धन्यवाद। 377 के अधीन LIC का जो मामला, हाँ सर,
आपको खुशी होनी चाहिए, सीनियर लोगों ने तो आशीर्वाद देना चाहिए हम लोगों को। यस सर, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि आरटीआई के 26 दिसंबर 2016 के इंश्योरेंस एजेंट का जो गैजेट जारी हुआ था, उसके कमीशन के अनुसार सरकार ने ये कहा था कि 2017 में एलआईसी के जितने भी एजेंट्स हैं उन्हें 17 में फाइनेंशियल ईयर में उन्हें लागू करना चाहिए और उनके अनुसार उनको पैसे और उनके जो इंश्योरेंस के अनुसार एजेंट्स लोगों को जो कमीशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आपको बताना चाहूंगी कि इंश्योरेंस एजेंट को ग्रेजुएटी उम्र के 60 साल पूरे करने पर तथा 15 साल व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 30,000 रुपए दिए जाते हैं और इसमें भी सिर्फ विनेश और कमीशन को ध्यान में लिए जाते हैं कि सरासर गलत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को ये विनती करूंगी कि बीमा जो हमारे एजेंट्स हैं उनको ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तथा बढ़ाकर दिए जाने चाहिए। यदि बीमा इंश्योरेंस एजेंट 25 से 30 साल अपनी सेवा देते हैं यानी एलआईसी में कार्य करते हैं तो पूरे साल की सेवा ध्यान में लेते हुए इंश्योरेंस एजेंट्स को मिलने वाला फॉर्म नंबर 16 के अनुसार पूरी आय को ध्यान में लेकर ग्रेजुएटी का भी पैसा मिलना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट क्लब मेंबर जो उनके हस्बैंड और वाइफ को दिए जाते हैं सर, इट इज वेरी आई नो उनके पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए सर। Rule under 377 only allowed to read the text, no any other matter. Thank you sir, thank you. You can read this. You already okay. Item number 25, the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. Honorable Minister. तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार में लाया जाए, जिसमें राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्ट संख्या 37 में नारी कुर्बन कुरुविकाकरण समुदाय को शामिल करना है। Okay. Honorable Member Shri Jay Kumar ji. Honorable Chairperson, I raise to register my views on this amendment bill of including a couple of communities in the schedule of the Constitution to enable them to get facilities and to have advancement in their life. Sir, I recall that a similar bill was there on April 5, 2022, this year itself. Then I spoke on that bill also. Then I mentioned that a few more communities, including these two communities, a few more communities also to be included in that bill. I am thankful to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin, for recommending this proposal to the central government to introduce these two communities. I request, and I also thank the National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes to enable this bill be processed, and they have also assisted in piloting this bill over here. Sir, while the Honorable Minister for Tribal Affairs moved the bill, even last time also when he moved the bill, I mentioned certain points, particularly regarding the financial angle of this bill. In this financial memorandum, nothing has been mentioned. There is a mention about the financial memorandum that the expenditure will be there, but it is not possible to estimate. I don't know why this vague statement in this. If we know the number of people who are going to be benefited in Tamil Nadu, the minister must be knowing it, his department must be knowing it. Without knowing that how many people are going to be benefited, a bill will not reach up to this point.
And we are all aware that how much money is spent per family of the scheduled tribe. So it is an easy proposal for anyone to arrive at the financial quantification of financial quantification of this, but it is very vague, and this should be taken into account properly. Sir, I wish to mention that there is a guideline from Niti Aayog that what formula or what method to be followed in allotting funds for the scheduled castes and scheduled tribes. I do not know, even in this current budget, that formula has not been adopted, and therefore the reduction in the budget is very astonishing. And if you see and quantify it, for scheduled castes, 40,634 crores has been reduced by not following the Niti Aayog guidelines. And for scheduled tribes, 9,399 crores is a deficit. Had the minister insisted upon that the guidelines given by the Niti Aayog should be followed, it would have been a great help for the scheduled caste and scheduled tribe people, and it is a huge amount it is going off. Another thing the minister is aware, I wish to point out that the pre-metric scholarship has been reduced in the current budget to an extent of 225 crores. About 4,000 crores is the total allotment for the scheduled caste. In that, pre-metric scholarship has been reduced to an extent of 225 crores compared with the previous year. No remedial measure has been taken. And all the more astonishing and shocking is that it is a matter of concern for the scheduled caste and scheduled tribe people. Yesterday, a member from Tamil Nadu, Mr. Subbarayan, also mentioned very vehemently, he recorded in this house, that the pre-metric scholarship is being stopped. It is through a circular, you are bringing an order to take away the benefits for the students of the scheduled caste and scheduled tribe community, and this government has been day in and day out, has been talking about developing the poor people, assisting the scheduled caste and scheduled tribe. We will bring them on par to the others. We will not treat in different ways. But here, behind the screen, what you are doing, you are stopping the pre-metric scholarship, which is very essential, to buy rubber and pencil, to buy their clothing, to have some excursion to go here and there for these tribal people and for the scheduled caste people. This small amount is being stopped. In which way it is correct, what the minister is going to say, what the minister is going to provide an alternative to the pre-metric scholarship, which this government is mercilessly stopping it. And the other thing is that the national fellowship, here again under that heading, 127 crores has been reduced when compared to the last year budget. No remedial measure has been taken. I have not seen any plus in financial allotment for the scheduled caste and scheduled tribe people. It is only negative. Why this is happening? Why the minister is not putting his foot down and tell the finance minister that a proportional amount is to be provided for these people? And I request the Honorable Minister to look into this matter. And there is another heading, Speaker Sahab, Manrega. Manrega, for which category of the people this has been segmented? Who are all the main beneficiaries in this? Who are the wage laborers? Who are the daily wage earners? These are all the people to be benefited under Manrega. Normally, the Manrega beneficiaries are below poverty line, who could not get even daily employment. To substitute that daily employment during the half-farm season, this Manrega used to be used. What this government is doing, in the last budget, this government has reduced straight away 25,000 crores in Manrega cut-off. Today, I am a bit pleased. When the finance minister was speaking over here, she mentioned that
as against the reduction of 25,000 crores, some about 16,400 crores has been added. Good sense prevailed. They have at least taken into account, they have realized they are doing injustice for this section of the people, poor people, and now woken up and they have added, and still there is a deficit of 8,600 crores. Sir, only 2 minutes, sir, I am the first speaker. Please conclude. Sir, and then you come to the education part of it. What is the education part of the scheduled tribes? 48.2% enrolled, and of which 31.3% getting dropped. 48.2%, of which 31.3% getting dropped before 8th class. That means only 16.9% teachers reaches the 8th class. Minister should take some remedial measures to see that the dropout is reduced. In 2016 and 20, admission of scheduled caste and scheduled tribe was 23% in the centrally funded institutions. Now it has gone down very bad. You have brought in Ekaleva schools to be appreciated. Residential schools named after Ekaleva, mainly to take care of the scheduled tribe people, because Ekaleva believed to be a scheduled tribe. But what is happening in that? About 400 schools you have established. Of the 400 schools, there is no regular staff is available. And finally, you have woken up and you have appointed in 378 schools 44,000 people, sir. Speaker, sir, 1 minute. 4,000 people. And of the 4,000 people you have appointed, only 70%, all the 70% are non-regular staff on contract basis. Why it is a school established? You should go for a permanent employment for the teachers, and I am sure that the minister will take up this. Even atrocities is increasing on the scheduled caste and scheduled tribe in 2018 and 19. I don't want to make that time. And this is because there is no effective control of the scheduled caste commission and scheduled tribe commission in this particular thing. The health of the scheduled caste people scheduled tribe people is far low. 42% of the children are anemic, and about 70 to 65% of women among the scheduled caste are anemic. Therefore, necessary corrective measures to be taken. Sir, I am happy to accept the bill to be passed in the House. I support this bill, and it is good. This Narikurawa means the fox catchers. Yes. And Narikurawa, and the other one is Kurivikar. Kurivikaran means those who catch birds, those who keep birds as the pet animal and grow. These are all the two communities taken, and few more communities are there. Kindly take steps. See that with folded hands, I beg the Honorable Minister, please wake up and see that your right is given. Take shelter under Niti Ayog. Ask this government to follow Niti Ayog, get substantial amount for the people. Without this substantial amount, this amendment is a waste. Thank you. Honorable Member Shri Ranjit Singh Nimbalkar. मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण बिल के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिए। अध्यक्ष महोदय, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर पे विकास की धारा पहुंच रही है। हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य जो है कि अंत्योदय से उदय का भाव, वही सरकार होती है, दिख रही है। इसलिए आज़ादी के 7 दशक के अधिक समय तक मुख्य धारा में जिन्हें शामिल नहीं कर पाए, वो पूर्ववर्ती सरकार, उन्हें आज देश के सबसे उच्चतम पद पे, महामहिम राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं हमारी सरकार ये बिल लाई जिसके अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। देश के अलग अलग भागों में कुछ पिछड़े जनजातियां हैं, अभी भी उनको सूचित नहीं किया गया है। इस बिल के माध्यम से ये किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कर विशेषतः महाराष्ट्र का पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में धनगर करके एक जनजाति है,
जिसको पिछड़ा समाज के अंदर आ जाती है, उन्हें आज भी अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि असल में ये धनगर आरक्षण का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति में 36वें क्रमांक पे धनगढ़ नाम का शब्द है, जो कि धनगढ़ महाराष्ट्र में बिल्कुल धनगढ़ नाम का कोई जनजाति नहीं है। धनगर की जगह धनगढ़ हो गया है और आज महाराष्ट्र के सरकार ने वहां पे डिक्लेरेशन भी दिया है कि धनगढ़ नाम का यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। लेकिन जो धनगर, जो पिछड़ी हुई जनजाति है, उनको आज तक ये अधिसूची में शामिल नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी संविधान पीठ पे फैसला दिया है कि अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दे चुके। इसी आधार पे महाराष्ट्र में माना गोवारी समाज को न्यायालय ने निर्णय मिल चुका है। गोंडमाना और गोंड गोवारी नाम की महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति जनजाति सूची में दर्ज है, जबकि इस नाम की जनजाति महाराष्ट्र में अस्तित्व ही नहीं है। न्यायालय ने माना कि गोंडमाना की जगह माना था कि गोंड गोवारी की जगह गोवारी जनजाति मानते हुए जनजाति का प्रमाण देने का आदेश न्यायालय दे चुकी है। बिल्कुल इसी तरह का मामला धनगर और धनगढ़ में है। धनगढ़ जहाँ पे कई जगह प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हो जाती है। महाराष्ट्र की बाहर की राज्यों में धनगढ़ बोला जाता है, यहाँ पे धनगर बोला जाता है। मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि धनगढ़ अस्तित्वहीन होने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने सामने सरकार खुद मान चुकी कि धनगढ़ जनजाति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ पॉइंट सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिससे लोग महत्व विषय पे स्थिति प्राप्त हो जाएगी। 1950 में महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संख्या 36 में शामिल हो इस विशेष जनजाति का उल्लेख यानी धनगढ़ प्रतिनिधित्व शून्य है। अगर प्रतिनिधित्व सिर्फ धनगर समाज का है, यही नहीं, सन 1881, सन 1931, सन 1941, सन 1951 में की जनगणना रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है कि इस जनगणना रिपोर्ट में जाति का, उपजाति का, जनजाति का, उपजनजाति का समूह धनगढ़ नाम का जनजाति नहीं पाया गया है, लेकिन धनगर पाया गया है। इसमें प्रत्येक जनगणना में ये रिपोर्ट अस्तित्व में है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1961 में RIGR द्वारा इस ग्रंथ की सूची में SC/ST सूची में धनगर अस्तित्व का प्रमाण करने के लिए 29 प्रतिष्ठित लेखकों तथा 30 दस्तावेज, साक्ष्य, जनगणना रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन इसमें धनगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बजाय दस्तावेज में धनगर संदर्भित जाति का जनजाति के रूप में पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम में 1959 में, बॉम्बे कोड फीस अधिनियम 1959 में निरस्त नहीं है। धनगढ़ की बजाय देवनागरी में धनगर का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य है कि महाराष्ट्र में वास्तविक अन्य धनगर नहीं पहचानता। धनगर में अन्य कोई नहीं पहचानता, धनगढ़ है नहीं, धनगर ही है। अध्यक्ष महोदय, जनजाति मामलों रिपोर्ट में 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट में धनगढ़ देवनागरी का उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार भी धनगर के रूप में वास्तविक जनजाति को पहचाने। 1982 किट्स द्वारा संकलित भारत में पाई जाने वाली जनजातियों में संग्रह में भारत की पूरी आबादी जातियों में जनजातियों में नाम शामिल है, जिसमें जिन जनजातियों का कोई नामों का उल्लेख किया जाए जिसमें धनगर जनजाति का अस्तित्व पाया गया है, उस पर धनगढ़ का कोई उल्लेख आज तक दिखाई नहीं गया। इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से इस सदन तथा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धनगढ़ की जगह धनगर को अनुसूचित जाति के अधिसूचित करने की कृपा करे तथा महाराष्ट्र का लाखों धनगर समाज आपकी तरफ देख रहा है कि उनको न्याय कब मिले। समस्त धनगर जनजाति के लोग आशा की तरह निगाह से आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं उनकी आशा आपकी तरफ ये सदन में रखना चाहता हूं कि उनकी आशा टूटने ना दे।
वही कई वर्षों से उनको न्याय मिलना अपेक्षित है। मैं आदरणीय मंत्री जी को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र के गरीब धनगर समाज को धनगढ़ की जगह अधिसूचित करके हमारे ऊपर कृपा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you. Honorable Member Shri D. Devi Kumar ji. மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே, வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த தீர்மானத்தின் மீது பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. இந்தியா சுதந்திரமடைந்து 75வது ஆண்டில் இந்த பழங்குடி மக்களுக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறந்திருக்கிறது. 1964ஆம் ஆண்டிலேயே நரிக்குறவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு பரிந்துரை செய்தது. அன்றைக்கிருந்த காங்கிரஸ் அரசும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஆனால் அது நிறைவடையவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு அதற்கிடையிலே பழங்குடியினருடைய சலுகைகளை நரிக்குறவர்களுக்கு வழங்கி வந்தார்கள். 1974ஆம் ஆண்டு வரை அப்படி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்யப்படாத நிலையில் அந்த சலுகைகளை அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது என்று சொன்னதன் காரணமாக அது நிறுத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலே இவர்கள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். கடந்த 60 ஆண்டுகளிலே பலமுறை தமிழ்நாடு அரசின் சார்பிலே இதற்கான பரிந்துரை அளிக்கப்பட்டு ஒன்றிய அரசு அதை அப்படியே கிடப்பிலேயே வைத்திருந்தார்கள். 2006ஆம் ஆண்டிலே அன்றைய முதல்வர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய கோரிக்கையை ஏற்று நரிக்குறவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஒன்றிய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். ஆனால் அப்பொழுதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. 2016ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பிலே வலியுறுத்தப்பட்டது. அது இன்றைக்குத்தான் நிறைவேறியிருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக அமைந்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை, நன்றியை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கின்றேன். இந்த நரிக்குறவர் மக்கள் தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல, தென்னிந்தியாவிலே கர்நாடகத்தில், ஆந்திராவில், மகாராஷ்டிராவில், குஜராத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஹரியானாவிலே இருக்கிறார்கள். ஹரியானாவிலே பௌரியா என்ற பெயரிலும், மத்திய பிரதேசத்திலே பார்தி என்ற பெயரிலும், குஜராத்திலே வாக்ரி என்ற பெயரிலும், கர்நாடகாவிலே ஹக்கி பக்கி என்ற பெயரிலும் இந்த மக்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். அங்கெல்லாம் இவர்களுக்கு பழங்குடியினர் பட்டியலிலே அவர்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டு வந்தன. இப்பொழுதுதான் தமிழ்நாட்டிலே அந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் இன்றைக்கு பழங்குடியினர் பட்டியலிலே சேர்க்கப்பட்டாலும் இவர்கள் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு பறவைகளை வேட்டையாட முடியவில்லை, விலங்குகளை பிடிக்க முடியவில்லை. அதற்கெல்லாம் வன பாதுகாப்பு சட்டங்களின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு தடை வந்துவிட்டது. அவர்கள் பாசிமணிகளை விற்றுத்தான் பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள். குடியிருப்புகள் கூட இல்லாத நிலை இருக்கிறது. இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான் அதற்கான சில நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றார். எனவே அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பதற்கு, அவர்களுக்கான குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கு சிறப்பு நிதியை ஒன்றிய அரசு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதிலே ஒரு திருத்தத்தை நான் அளித்திருக்கின்றேன். அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலே இருந்தபொழுது நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் என்று மரியாதையோடு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது பழங்குடியினர் பட்டியலில் அவர்கள் மாற்றுகிற நேரத்திலே நரிக்குறவன், குருவிக்காரன் என்று மரியாதை குறைவாக அவர்கள் பெயர்கள் சுட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அதை வழக்கம் போல ஏற்கனவே இருந்த முறையிலே திருத்த வேண்டும் என்ற ஒரு திருத்தத்தை நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். அதை ஏற்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்ற எஸ்சி எஸ்டி சாதிகள் அனைத்துமே இப்படித்தான் இன் என்ற முடியும் விதத்திலே, மரியாதை குறைவான விதத்திலே அவர்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை மற்ற சாதியினர் பெயரை போல மரியாதையோடு அழைக்கும் விதத்திலே ஒரு சட்ட திருத்தத்தை இந்த அவையிலே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் எஸ்சி பட்டியலிலே இன்றைக்கு இருக்கிற சாதிகளிலே பல சாதிகள் எஸ்டி குணாம்சங்கள், பண்பாட்டு கூறுகள் கொண்ட சாதிகளாக தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்றன. ஏறத்தாழ 17 சாதிகள் அப்படி இருக்கின்றன. அவற்றையும் மீண்டும் அவற்றை அவர்களுக்கு உரிய விதத்திலே எஸ்டி பட்டியலிலே
சேர்த்து அவர்களுடைய அந்த சலுகைகள் அவர்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு பழங்குடியின மக்களிலே குறிப்பாக அங்கே இருக்கின்ற பல சாதிகள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் இருந்தாலும் பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப் என்ற பிவிடிஜி குரூப்பிலே சில சாதிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த சாதிகள் இன்றைக்கு மிகவும் பாதிப்படைந்த நிலையிலே அவர்கள் எல்லாம் சமவெளி பிரதேசத்திலே இருக்கிறவர்கள். அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக போதுமான நிதி ஒன்றிய அரசிடமிருந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதில்லை. இன்றைக்கு அவர்களுக்கான நிதி முழுமையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அவை செலவு செய்யப்பட்டால் அந்த மக்களுடைய நிலை எந்த அளவுக்கோ முன்னேறி இருக்கும். அதற்கான நடவடிக்கையை ஒன்றிய அரசு எடுக்க வேண்டும். இன்றைக்கு அவர்கள் எண்ணிக்கையிலே மிக குறைவானவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே, அவர்களுக்காக கேட்பவர்கள் யாரும் இல்லாத காரணத்தினாலே, அவர்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த மக்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். அப்படியான புறக்கணிப்புக்கு இனியும் அவர்களை ஆளாக்க கூடாது. அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக ஒன்றிய அரசு போதுமான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். அங்கே இன்றைக்கு பல மாநிலங்களிலே பழங்குடியின மக்களுக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன, கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, ஏகலவ்யா பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே போதுமான ஏகலவ்யா பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை. என்னுடைய விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே 2 விழுக்காடு பழங்குடியின மக்கள் இருக்கிறார்கள், இருளர் பழங்குடியினர். அவர்களுக்காக அங்கே ஏகலவ்யா பள்ளியை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றேன். விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே ஏகலவ்யா பள்ளியை உருவாக்கி அங்கே இருக்கின்ற பழங்குடியின மக்களுக்கு அவருடைய கல்வி மேம்பாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தீர்மானம் இன்றைக்கு நிறைவேறுவதற்கு காரணமாக முதல்ல அதற்கு துவக்க புள்ளி அமைத்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களையும் இன்றைய முதல்வர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களையும் மீண்டும் நன்றியோடு நினைத்து இந்த அவைக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். வணக்கம். Honorable Member Srimati Pradima Mondalji. Chairperson, sir, for allowing me to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order, Second Amendment Bill 2022. Sir, the scheduled tribes are among the most disadvantaged socio-economic groups in India. They have been facing problems since colonial India to the present time. The tribal population of the country, as per 2011 census report, is 10.43 crore, constituting 8.6% of the total population. 89.97% of them live in rural areas and 10.03% in urban areas. Inclusion of more tribes into the list of scheduled tribes is surely a welcoming step. And for this, I would like to acknowledge the efforts and thank the researchers working in the sphere of the legislative procedure of the central government. But this is just step one. Inclusion is just the beginning. There is a long way that has to be covered to benefit the indigenous people in reality. Sir, the bill seeks to include Narikoravan and Kurivikaran tribes of Tamil Nadu. Kuruvikaran. Yes. Tribes of Tamil Nadu into the list of scheduled tribes. This has been a much awaited step, and I support the decision of the government. Here I would like to put forth that the Narikoravarans are a semi-nomadic tribes originating in northern India before migrating south to Tamil Nadu about half a millennia ago. They have lived dire poverty. They have lived a dire poverty and making and selling beads and small ornaments in the local market. The literacy level among these both these tribal groups have been extremely low, and due to lack of knowledge and extremely low income, the cycle of poverty is continuing generation after generation. Thus, the need of the hour is to provide the youth a platform for free education and skill development in order to help in their
upliftment and better future. Sir, inequality is the most prominent disadvantage witnessed among the scheduled tribes of India. That too in every step, beginning from birth to reaching the pinnacle of careers. And at every step they face challenges. There is a lack of proper health center in areas inhabited by scheduled tribe, and thus there is a higher infant and maternal mortality rate amongst them. According to the paper titled Infant Mortality Among Scheduled Tribes in Central India, a concern by Mr. Arvind Varma and Mr. Kalyan Shah, the infant mortality rate of India stands at 40 per 1,000 live births, whereas amongst ST population it stands at 84. This is horrifying picture. In states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, the figure is beyond 100. So has the government looked at this disparity and tried to resolve the situation? I agree that an overnight change is not possible in this sphere, but in something like appointment by the governments, quick steps can obviously be taken. Thousands of posts are lying vacant in diverse branches, but ST and SC people are not employed. The amount allocated for their upliftment are lying either unutilized or diverted in other areas. And the member representing scheduled caste and scheduled tribe population in the Supreme Court of India is next to nil. So it seems that with every step forward, we are actually taking a long stride backward. These needs an immediate attention of the government, coupled with willingness to uplift this society. So, forest resources are one of the major resources of livelihood for the scheduled tribes. But due to government action, these are being taken away from them. As many as 150,000 applications for individual forest rights in a single state like Odisha have been rejected without any reason. So, not just that, the indigenous people have no say in the matter related to their forest right. The government has taken the matter solely in his own hand. Thus, changes brought about in laws and rules are harming the people instead of helping them. So, the Narikovarans share religious, cultural and political characteristics with many of the Roma groups in Europe, as they are traditionally the Narikovarans are hunters, as their name means fox or jackal hunters, but since hunting was outlawed in the country, these people have been pushed into depths of poverty. Due to this, education is a big problem of the community. Only a small number of children have the opportunity for education in the medium of their mother tongue. Again, majority of the students drop out of school. Please. Low-level school learning, children not only because of household or personal reason, but also because of lack of government's efforts. Thus, main thrust area again should be on spreading education. The vulnerability of the tribal community in India make them solely dependent on government services in order to lead a human life, thus making it imperative for a public policy shift. Sir, I would like to put forth that the government of West Bengal, under the leadership of our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, has launched a unique scheme named Oikosri and Oasis. It is a scholarship program, and to uplift the SC/ST students for their higher education. And not only that, sir, under the scheme Joy, Honorable Member Gurumurthy. Sir, 1 minute. Tapushili Bondhu and Joy Johar, Government of West Bengal is providing 1,000 rupees at the age of 60 of the SC/ST people. And sir, Government of West Bengal has sent a proposal for inclusion of 11 tribal groups in the list of scheduled tribes.
that is the Khash, Bhujel, and Nawar, and many others. So I would like to request the Honorable Minister to look into the matter and take immediate step for inclusion of this tribe in your list. And sir, finally, I would like to conclude by saying two lines of the Bishop Kavi Rabindranath Thakur that Jare tumi niche phalo, she tomare badhi beje niche, poschate rekhecho jare, she tomare poschate taniche. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Honorable Member Gurumurthy. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. Ever Elvin, the architect of NIFA and defender of Indian tribal people beloved, integration was not possible without political and spiritual equality. This is the soul and purview of provisions towards tribal heritage in the Constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar, and something that should guide our future course of action. In this sense, the bill taken up for discussion today provides for the inclusion of Narikkorvan along with Kurivikaran communities in the list of scheduled tribes in respect of the state of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, according to an NGO survey in 2009, among Narikkorvan, there are 8,280 families having population of about 40,000 people. The name Narikkorvar respect Narikkoravan and Narikkorvar respect one and the same community. Kurivikaran is an additional colloquial name of this community in Tamil Nadu. Due to one of their traditional occupations of trapping birds, Narikkoravan, a nomadic community by tradition, constitute the most deprived sections of all the communities in the state, living under extremely poor and unhygienic conditions in the outskirts of villages and towns. Speaker, sir, the positives of this bill are it proposes to widen the umbrella of inclusion of more tribes and sub-tribes under the ambit of scheduled tribes of the state of Tamil Nadu. This will ensure that more tribal communities get the scheduled tribes status and are eligible for government schemes, and government also should sensitize the tribal communities regarding the government schemes implementing specifically for them. The tribal communities are an easy target for exploitation and discrimination. Moreover, geographical isolation hampers their development. They are malnourished and lack access to basic education and healthcare system. Speaker, sir, now after 75 years of independence, it is even more crucial for us to recognize the fact that the tribal communities still need the constitutional status of scheduled tribes, and specific schemes aimed to preserve their culture will ensure their advancement, sir. In fact, the literacy rate of tribal community in just 59% as opposed to all overall literacy rate of 73%. To overcome the literacy gap, the government should encourage tribal education, particularly at the primary level, sir. Speaker, sir, under the visionary leadership of our CM Y. Jagan Mohan Reddy Garu, our state, Andhra Pradesh, is implementing one district, one medical college program. As of now, the state of Andhra Pradesh has only 14 government medical colleges, including 3 new government medical colleges that we are sanctioned by the Government of India on 20th March 2020. This will help more medical students to pursue quality medical education, affordable cost, while ensuring that healthcare is more accessible to the people, even remote regions. If the central government sanctions more medical colleges, more students can get better and more equitable access to quality medical education in tribal areas. In Andhra Pradesh Recognition Act 2014 provided for the setting up a central tribal university in Andhra Pradesh. It started functioning through a transit campus from the year 2019-2020. However, the university still lacks a permanent campus
and necessary infrastructure, the AP state government has allocated the requisite land for setting up Central University and is ready to provide all support needed. I would take this opportunity to request the government to expedite the development works related to the Central Tribal University of Andhra Pradesh, sir. Speaker, sir, while conserving the forest in India, government should think about well-being of tribal communities residing in the reserve forest and in eco-sensitive zones for decades and depends exclusively on forest resources for a livelihood for reference. For reference, the tribes living in my Tirupati parliamentary constituency, Pulicat eco-sensitive zone, were facing several challenges for their existence. The ESG's guidelines restricting developmental activities and failed to provide basic amenities to tribes, especially road connectivity, even though the state government took special interest for providing them road connectivity to give them access to emergency services like ambulances and fire services. Forest officials conveying that ESG guidelines won't permit such activities. Speaker, sir, I would like to conclude that YSR Congress Party will support this bill. I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account. Sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ramesh Maji. Ramesh. धन्यवाद चेयरमैन सर. द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 के ऊपर चर्चा हो रहा है या तमिलनाडु स्टेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है. मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ एवं उड़ीसा के तरफ से 169 जो प्रपोजल है 1978 से आज तक उड़ीसा गवर्नमेंट नवीन पटनायक जी ने बहुत सारे प्रपोजल भेजे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. अभी तक वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं. मेरा निवेदन है कि इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से सोचना चाहिए. एक टास्क फोर्स गठित हुआ था 2014 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, जिसमें 9 प्रपोजल जो उड़ीसा गवर्नमेंट के प्रायोरिटी केस में इंक्लूड करना था. और वो प्रपोजल आया था भंजपुरन, भगत, भोक्ता, दुर्वा, कलंज, नकसिया, पब, खंडायत भूया, तुमुड़िया, तामड़िया, चौपुआ कमार, कंधिया. मेरा संसदीय जो क्षेत्र है नवरंगपुर, वहाँ एक कोरापुट जिले के दुर्वा कम्युनिटी बहुत दिनों से रह रहे हैं. वो जनजाति का दर्जा उनको मिलना चाहिए. उनका बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं. और मालकानगिरी जिला के कोंडारेड्डी एक संप्रदाय है, वो भी जनजाति के दर्जा के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर चुके हैं. अभी तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं. और उड़ीसा गवर्नमेंट ने नवीन पटनायक जी ने 16 सितंबर 2022 को भी खत लिखा है कि 169 जो पेंडिंग केस है अभी तक जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए हुआ नहीं है. मेरा डिमांड है जितना सारे प्रपोजल उड़ीसा से आया है उस बारे में सोचना चाहिए. आज जो बिल आया है बीजू जनता दल के तरफ से, हमारा पार्टी लीडर नवीन पटनायक के तरफ से, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. धन्यवाद. Thank you. All members, HCN. बहुत शुक्रिया जनाब. द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हूँ. जनाब, मैं इस बिल की तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ एतराज़ात हैं. वो ये कि ये सारा मामला जो है ये सारे पॉलिटिकल रीजंस के लिए है. और दरअसल होना ये चाहिए था कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ मीनिंगफुल जो बिल्कुल ऐसे इकदाम किए जाए ताकि इसका कल्याण हो, इसकी बहबूदी हो, लेकिन वो हो नहीं रहा. फ़कत एक जाति को, एक कम्युनिटी को इसमें शामिल करने से कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं हो. जैसा कि अगर आपका मकसद होता कि वाकई तौर पर इनकी कोई मदद होनी चाहिए थी, तो फिर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते, फिर आप नेशनल स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते जो इस कम्युनिटी के लिए है. अब देखिए वास्तव में असल में क्या हो रहा है.
असल में यह है कि प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं ताकि इसका कल्याण हो, इसकी बहबूदी हो और ये तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए। जनाब, फॉर हिस्टोरिकल रीजंस ये जो ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हुए। अब देखिए जनाब, जम्मू कश्मीर की बात लीजिए। जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खासी आबादी है गुजर बकरवाल की, जो माइग्रेटरियाँ अपने लाइफ स्टॉक के साथ जम्मू से श्रीनगर जाते हैं गर्मियों में और श्रीनगर से वापस जम्मू आते हैं सर्दियों में। उनके लिए कोई 1521 एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए कुछ सीजनल टीचिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके लिए 2217 के करीब ट्राइबल जो उनका स्टाफ है, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। वो जब माइग्रेट हो जाते हैं तो वो जो सारे टीचर्स हैं, ट्राइबल टीचर्स जो हैं उन सेंटर्स के, उनकी छुट्टी की जाती है और 2007 से जनाब वो अपनी जो रेगुलराइजेशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या तो यही इकदाम, अगर प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि कोई कल्याण हो, कोई बेहतरी हो, कोई बहबूदी हो, तो वेलफेयर हो, तो फिर ऐसे इकदाम कीजिए ना ताकि आप इनके लिए व्यवस्था करें तालीम की। इनके बच्चों के लिए वो हो नहीं रहा है। अब जनाब अभी तो बात ही नहीं हुई ना, जनाब जो ड्रॉप आउट स्टेट है, जैसा कि पहले कहा गया, सबसे ज़्यादा बच्चों की जो प्री प्राइमरी और प्री मिडिल लेवल पर है वो इन्हीं की है। अब जनाब हेल्थ केयर की बात देखिए, सबसे कम हेल्थ केयर इनके लिए जो हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में, जो अपने लाइफ स्टाइल की जो मैंने पहले ही गुजारिश की उसके साथ जाती है एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में। अब जनाब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये जो मैंने कहा कि 1521 सेंटर बनाए गए, और जहाँ का स्टाफ आज भी, अब देखिए उन बच्चों की तालीम मुतासिर हो, कोई कमिटमेंट नहीं रही उस स्टाफ की, तो मंत्री जी को चाहिए ये कि प्रयास करें ताकि उनकी नौकरी पक्की हो जाए। और ये जो योजना जो है, ये जो स्कीम है, इसमें इसको पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तहकम किया जाए। अब जनाब बात यह है कि हम कल्याण की बात करते हैं। पिछले साल ही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुबह सवेरे जनाब एक बस्ती पर दावा बोल दिया रूपनगर एरिया में, ताकि क्योंकि आप चाहते नहीं कि वन से जंगल से बाहर आ जाए, इनका कोई वहाँ पर कोई टाउन के पेरिफेरी में कोई बस्ती हो, और सुबह सवेरे ये सारी डिमोलिश की, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रयास किया गया। अब जनाब जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है, और खासकर गर्ल चाइल्ड की लिटरेसी के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जनाब चाइल्ड मोर्टलिटी सबसे ज़्यादा है, स्टारवेशन डेथ सबसे ज़्यादा है, और अनीमिया जो है जनाब सबसे ज़्यादा जो हमारी जो हमारी एसटी कम्युनिटी के ताल्लुक रहती है उनका ही सबसे ज़्यादा वहाँ ही चुनौती है, वहाँ ही सबसे ज़्यादा मसाइल है। मैं वेलकम करता हूँ, ये सही है कि आपने और कम्युनिटी को एक सर्वे के बाद आपने ये प्रयास किया कि उनको शामिल करें, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मीनिंगफुल स्टेप्स उठाइए, और जैसा कि मैंने गुजारिश की मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर में जो ये हेबिटेशन की बात करें, और दूसरी बात है वो उनको परमानेंट बनाने की बात करें, वही एक मीनिंगफुल होगा। वरना क्या मकसद है, आप सियासी और पॉलिटिकल रीजन आप इसको शामिल करते हैं और उसके बाद उसके कल्याण के लिए कोई कुछ करता ही नहीं। Thank you. Honorable Member Srimati Supriya Sreji. Sir, I stand here to support this bill today, sir. In a nutshell, the objects and the reasons of this bill, it says the Article 342 of the Scheduled Tribe, where the President may respect any state or union territory where the state, after consultations with the Governor, would specify that the tribes and tribal communities as a part of groups within the tribal communities, which shall, by the purpose of Constitution, be deemed to be scheduled tribes. I welcome this step, and in one of the articles it is clearly said that Tamil Nadu, the Honourable Chief Minister, has really followed up, and Government of India has been very kind. Let me go back a little bit in time, because, sir, what has happened कि जिस राज्य से मैं आती हूँ, कई सालों से वहाँ 3-4 मांगे हो रही है। एक तो धनगर समाज की बड़ी मांग है कि उनको ट्राइब में धनगर, महाराष्ट्र मराठी में धनगर कहते हैं, नॉर्थ में उसी को धनगढ़ कहते हैं। सो इट इज़ ओनली अ प्रोनाउंसिएशन थिंग। धनगर हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं, दिल्ली में धनगढ़ कहते हैं, नॉर्थ में कहते हैं। तो हमारी बहुत सालों से मांग है कि धनगढ़ और धनगढ़ एक ही है, तो इनको इसमें इंक्लूड किया जाए। ये महाराष्ट्र की बहुत दिनों से मांग है। उसी हिसाब से मराठा समाज हो,
मुस्लिम समाज हो, लिंगायत समाज हो, बहुत सारे आरक्षणों में बदलाव की मांग बहुत सालों से हो रही है। मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़े आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा रहा, धनगर समाज का बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ। और आपको सर याद होगा कि 2013 में जब हमारी सरकार यहाँ भी थी और केंद्र महाराष्ट्र में भी थी, एक बड़ा आंदोलन चला था। और उसके बाद भारतीय जनता पक्ष के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र में युवा नेता है, जो बाद में 14 साल में सीएम बने, उन्होंने कहा था कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम धनगर समाज को आरक्षण दे देंगे जो ट्राइब वाला चाहिए। 2014 की बात मैं कह रही हूँ सर। उसके बाद कोई कमीशन बनाया गया, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। पिछले 6 सालों से ये समाज लड़ रहा है, भले धनगर समाज हो, भले मराठा समाज हो, भले लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सारों की मांग महाराष्ट्र में है। बहुत सारे वहाँ एजिटेशंस होते हैं, मोर्चे होते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि अगर आप तमिलनाडु के लिए कर सकते हैं तो आप महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर रहे। और ये भी आपके 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए, एक उत्तर प्रदेश का है गोंडा के लिए, एक है तो पीस बाय मील छोटा छोटा एक बिल लाते। क्यों नहीं आप ऐसा करते कि आपकी सरकार इतनी बड़ी 303 की अपनी इतनी बड़ी यहाँ आपका स्ट्रेंथ है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या है। और हमारी मांग क्या है कि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, उनके दे दीजिए। और हमको किसी का और का निकाल के इनका नहीं चाहिए। वो मैं स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि भले धनगर हो, भले मराठा हो, भले लिंगायत हो, भले मुस्लिम हो, हमको दूसरे का छीन के किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। जो है वो आरक्षण वैसा ही रहेगा, इनके लिए अलग से आप करें, ये हमारी बहुत सालों से मांग है। यहाँ भी आपकी सरकार है, अभी राज्य में भी ईडी सरकार आई है, उसमें भी वो युवा नेता भी डिप्टी सीएम बन गए। तो उनका जो भाषण है मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, उसके बाद हफ्ते में एक तो कैबिनेट होती है, 5 साल में पता नहीं कितनी कैबिनेट, मेरा तो गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर हफ्ते की आप ही के लिए 200-300 कैबिनेट तो हो चुकी है। अभी तो धनगरों का आरक्षण मिला नहीं है, ना मराठा समाज को मिला है, ना लिंगायतों को मिला, ना मुसलमानों को मिला। मेरी सिर्फ केंद्र सरकार की विनती है कि ये पीस बाय पीस मील जो आप लाते हैं, उस हिसाब से एक व्यापक तरीके से इन सब समाजों की जो मांग है वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाइए और आप चर्चा कीजिए, इसी से एक बदलाव अच्छा आ सकता है सर। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री के सुब्बरायन जी। ஸ்பீக்கர் சார் வணக்கம். இந்த பில்லை நான் வரவேற்கிறேன், ஆதரிக்கிறேன். இதில் எனக்கு முன்னர் பேசிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் ரவிக்குமார் முன்மொழிந்த அந்த திருத்தத்தை நானும் வழிமொழிகிறேன். ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் என் என்று முடிகிற போது ஒரு இழிவான சொல்லாக அது அர்த்தப்படுத்தப்படுகிறது. அது ஆர் என்று மாற்றப்பட்டால் அந்த இழிவு நீங்கிவிடும். எனவே நரி குறவன் என்று இருப்பதை குறவர் என்று மாற்ற வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமான, மிக மிக நியாயமான ஒரு கோரிக்கையாகும். அந்த கோரிக்கையை நானும் தங்கள் மூலமாக வழிமொழிகிறேன். அடுத்து நான் குறிப்பிட விரும்புவது, ஜெயக்குமார் அவர்கள் குறிப்பிட்டதையும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நான் முன்னர் சொன்ன சர்க்குலேட் ஆகியிருக்கிறது. அதுவும் நம்முடைய எஸ்டி அமைச்சரகத்திலிருந்து ஒரு சர்க்குலர் ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பை பழங்குடி மக்களுக்கு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று போட்டிருப்பது தவறிலும் மிகப்பெரிய தவறாகும். அந்த தவறை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் நான் வற்புறுத்துகிறேன். அடுத்து, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே மாதிரி ஒரு சட்ட முன்வடிவை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்மொழிந்த போது நான் குறிப்பிட்டேன், நரிக்குறவர் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு தமிழ்நாட்டில் மலையாளி என்ற ஒரு இனம் இருக்கிறது. மலையாளி என்ற ஒரு இனம் தமிழ்நாட்டில் 14 மாவட்டங்களுக்கு மேல் இருக்கிறார்கள் பழங்குடி மக்கள். 12 மாவட்டங்களில் அவர்கள் எஸ்டி என்று அங்கீகரித்திருக்கிறது அரசு.
ஆனால் ஒரே ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் மட்டும் அதே மலையாளி மக்கள் பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை. இது ஒரு அப்பட்டமான அநீதி. இந்த அநீதி களையப்பட வேண்டும் என்று நான் கடந்த ஏப்ரல் மாதமே பேசினேன், இதே அவையில் பேசினேன், அமைச்சரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு வந்தேன். ஆனால் அது களையப்படவில்லை. எனக்கு ஒரு கடிதத்தை அமைச்சர் அனுப்பினார்கள். மாநில அரசிலிருந்து பரிந்துரை வந்தால் அது பரிசீலிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார்கள். நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை நேரிலே சந்தித்து இவற்றை கொடுத்து பரிந்துரை அனுப்ப சொல்லி பரிந்துரையும் அனுப்பப்பட்டு விட்டதாக மாநில அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. பின்னரே இந்த திருத்த பட்டியலில் நரிக்குறவா, குருவிக்காரர் என்ற பட்டியலோடு மலையாளி என்ற எஸ்டி மாநிலத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் ஏற்கப்பட்டதை ஈரோடு மாவட்டத்திலும் ஏற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த திருத்தத்தையும் அமைச்சர் அவர்கள் பட்ஜெட் தொடரிலாவது முன்மொழிய வேண்டும், அல்லது இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலாவது முன்மொழிந்து அது அந்த தவறை திருத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please conclude. Please conclude. Within a minute, I will conclude. Okay, please. Sir, நிறைவாக நான் குறிப்பிட விரும்புவது எஸ்டி நலன் குறித்து பலரும் நாம் பேசியிருக்கிறோம். ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் பிளேஸ் பண்ண வேண்டும் என்று நான் எஸ்டி அமைச்சரவையை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அருந்ததி ராய் அவர்கள் தண்டகாரண்ய காடுகளுக்கு சென்று அங்குள்ள நிலைமைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த கட்டுரையில் ஏறத்தாழ 600க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து பல நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து வந்த அந்த கிராமங்களில் இருந்து அவர்களை வேதாந்தா கம்பெனியினுடைய அடியாட்கள் வெளியேற்றி விட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி வெளியேற்றப்பட்டிருப்பது ஒரு பழங்குடியின பெண் பிரதிநிதி குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிற போது அந்த அநீதி நடப்பது தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மட்டுமல்ல நடந்ததை திருத்த வேண்டும். எனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எவ்வளவு கிராமங்களில் இருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்களோ அதே கிராமங்களில் அவர்களை குடியமர்த்த உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Honorable Member Sri V.K. Srikandan. Please start. Respected Speaker, sir, I thank you very much for allowing me to participate in a bill titled the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 concerning scheduled tribes, and it is a welcome steps to expanding the list of scheduled tribes. However, I take this opportunity to highlight here the problems and difficulties being faced by tribal community in Attapadi, which is a part of my parliamentary constituency, Palakkad. Attapadi is a tribal taluk that comes under Palakkad district in Kerala, with a population of more than 72,000 people, out of which tribal people accounts for 33,000. So Attapadi basically is a tribal dominated taluk. Some of the tribal hamlets or Uru named Murugala, Kinattukara, Kadugumanna, Tare Tudukki, Mele Tudukki, Gelasi, Abbanur under Pudur Panchayat and Maranatti in Cholayur Panchayat, out of nearly 200 hamlets in Attapadi, lack proper transportation, electricity, drinking water, medical facility. Nearly 30 hamlets do not have community centers. Nearly 30 Anganwadis are working without permanent structures. The community kitchens working earlier have been stopped functioning, resulting into again the nutrition deficiency among this tribal taluk. Unemployment is a major issue which prompts the youth to take the path of drug addiction and consumption of liquor. The tribal people were enjoying 200 working days under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. But now with the new guidelines, the limitation of worksite to 20 under Mandrega,
the tribal people may not get even 100 working days. It has been widely reported about the growing number of infant deaths of account of malnutrition. The pregnant women there are on the high risk list owing to a slew of health issues such as suffering from disease like anemia, etc. More than 120 infant children lost their lives during last 8 years. There are no basic facilities available to the tribal hamlets mentioned earlier falling in the forest area, and no vehicle can reach this hamlets in case of emergency. There is an urgent need to construct a bridge over river Bhavani and road leading to the proposed bridge so that these people could avail medical treatment. In the absence of bridge across river Bhavani, the people have to walk a long distance carrying patients on their shoulders to reach hospitals. Since the government tribal hospital at Kotatara does not have much required facilities, they have to travel nearly 100 kilometers for specialized treatment. Sir, there is no proper internet connectivity in this tribal hamlet, which affects the study of tribal students. There is no educational institution like Jawahar Vidyalaya, which has been a demand of the people of the tribal taluk. Therefore, I urge upon the government to take immediate steps to address the issues mentioned above in coordination with all concerned for the benefit of scheduled tribes community. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri Raju Bistaji. धन्यवाद सर आपका। और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं सर। और हमें आज बड़ा गर्व होता है कि जब हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो इसी समाज ट्राइबल समाज से आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, इन सभी का बहुत तेजी से जो है उन्नति और उनका विकास हो रहा है। आंकड़े स्वयं बताती है कि जिस तरह से 2013-14 में ट्राइबल मिनिस्ट्री के ऊपर में करीब 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा और बजट होता था, आज वो बढ़ के 90,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 360% की ग्रोथ है। और आदिवासी समाज जिसको अपना भगवान मानता है, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है वो एक जनजाति समाज, जनजाति गौरव के रूप में मनाता है। वो मोदी जी की और इस सरकार की बहुत बड़ी समाज को देन है। सर, मैं सीधा दार्जिलिंग की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि दार्जिलिंग का सांसद होना अपने आप में बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। भारत में एकमात्र जिला जिसमें एक तरफ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत कह लीजिए या चाइना लगता है, एक तरफ बिहार, सिक्किम और आसाम भी लगता है। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आप ये किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस आपको देखना है, मैं स्वागत करना चाहूँगा। दार्जिलिंग में हर जाति समाज के लोग मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा एक विशिष्ट स्थान है। चाहे वहाँ की चाय हो, चाहे वहाँ का टॉय ट्रेन हो, वहाँ की टूरिज्म हो, और हाइड्रो पावर से बिजली भी सबसे पहले हिंदुस्तान में दार्जिलिंग में आई। और भारत में बसने वाले करीब 1.5 करोड़ गोरखा समाज का ये धड़कन है, उनकी आत्मा भी दार्जिलिंग में बसती है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के जो 1.5 करोड़ गोरखा है, आए दिन इनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार होता है। जो संविधान सबको समान अधिकार देता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये शायद अधिकार हमारे लिए नहीं है। जबकि आप सर ये मानेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जब भारत का संविधान बना, तब उस संविधान के सदस्य बनाने वाले 2 गोरखा भी थे उन दिनों, डम्बर सिंह गुरुंग जी और अरिबहादुर गुरुंग जी। इशू ये है सर कि भारत नेपाल मैत्री, जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप टीटी है, उसके कारण दार्जिलिंग और खास करके जो सिक्किम में रहने वाले गोरखा हैं, उनको बार बार विदेशी और उनको नेपाली नागरिक कहा जाता है। और इसके कारण जो है आपने देखा होगा, कई बार दार्जिलिंग में कई सारे आंदोलन भी हुई, गोरखालैंड अलग राज्य की मांग भी हुई। खैर, मैं वो आज विषय नहीं रखूंगा, वो अलग विषय अलग फोरम में करूंगा। मेरा ये कहना है सर, अगर जो देखिए गोरखा 1931-1941 तक
ये ट्राइबल स्टेटस इनके पास था, हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1951 के बाद बहुत चालाकी से जो है उनको उस अधिकार से छीन लिया गया। और पश्चिम बंगाल के हमारे साथी बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे इस बिल के ऊपर में, उन्होंने राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया। और उनका दूसरा मेरा उनके ऊपर आरोप यह है कि पूरा दार्जिलिंग जब 1954 में बंगाल का हिस्सा बना तो जमीन की तो अपना बना लिया, अपना मान लिया, लेकिन वहां रहने वाले जनताओं को अब तक इन्होंने अपना नहीं माना। मेरा आपके माध्यम से सर ये है कि जो छूटे हुए 11 जनजाति है उनको एसटी स्टेटस मिले, उसका कारण और भी है सर। FRA एक्ट 2006 दार्जिलिंग में लागू नहीं है। दार्जिलिंग में ज्यादातर लोग जो है चाय बागान में काम करते हैं, उनके पास पट्टा नहीं है, 200 साल से है। और वहां की स्टेट की सरकार आज जो है घुसपैठी करके जो अलग अलग देशों से आते हैं उनको उन चाय बागान में बसा करके वहां से गोरखाओं को भगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम गोरखाओं को ये एसटी स्टेटस देते हैं सर, उनकी जो बहुत बड़ी समस्या है, उनको बार बार ये जो विदेशी का लांछना लगता है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और लेपचा, धुपका, भूटिया, योलमा, शेरपा, लिंबू, तामांग ये ऑलरेडी एसटी में है। लिंबू और तामांग को तो 2003 में एसटी का स्टेटस उनको मिला है, यानी 2003 अटल जी के समय में। आज मगर, राई, सुनुवार, याखा, गुरुंग, नेवार, खस, धीमाल, धामी, भुजेल ऐसे 11 जनजातियां उस स्टेटस से छूटी हुई है और ये हम उनको देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये उनके बच्चों को एडमिशन मिले इसके लिए नहीं है, लेकिन उनके ऊपर में जो विदेशी होने का ये जो बार बार लांछना लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो भी कहते हैं विदेशी हो, पासपोर्ट बनाने जाओ तो वो अधिकारी आके इतना तंग करते हैं, वो कहते हैं आप नेपाल से हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ तो भी यही समस्या। तो ये एक जो 11 जनजातियां हैं, अगर हम उनको एसटी स्टेटस दे देते हैं तो इनका बहुत एक बड़ी समस्या का हल होगा। और मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, मैं स्वयं मंत्री जी से कई बार मिला हूं और भारत सरकार ने भी प्रयास किया है, कई बार कमेटियां भी बनी है और कमेटियों में जो है उनको लेकर के मतलब काफी अच्छी बातें भी लिखी गई है। अब मैं ये चाहता हूं इसमें ज्यादा देरी नहीं हो और जल्द से जल्द उनको ये अधिकार मिले। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिवाल वेरीवाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश नूतन संशोधन विधेयक 2022 पर जो चर्चा हो रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सौद मुद्दे, न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण वर्तमान में जिला न्यायपालिका उच्च और निम्न के लिए लागू है। इसमें अधीनस्थ अदालतों को मजबूत किया और विविधता का विस्तार हुआ, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों को बिना किसी आरक्षण के उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है। इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बिना किसी आरक्षण के पदोन्नत किया जाता है। यही कारण है कि आज भी पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और OBC को लगता है कि संवैधानिक न्यायालयों की नीतियों और न्याय शास्त्र में उनकी आवाज़ अनसुनी रहती है। वे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच प्रत्युत्तर को हमारे लोकतांत्रिक संविधान के कामकाज को सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानते हैं। समझ मुद्दे, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में SC, ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षण की संरचनात्मक भेदभाव बहिष्कार से उत्पन्न होने वाले सामाजिक आशय के समुदायों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जा सकता है। वैधानिक न्यायालयों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन के लिए एक नए कानून के अंतर्गत आरक्षण देकर पात्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। समझ मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का एक निर्णय गत 7 नवंबर 2022 को आया, जिसमें संसद में बहुमत से पारित आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों के लिए गए फैसले पर वैधता की मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारी संभावना अवसर के द्वार भी खोल दिए। आज इंदिरा साहनी जजमेंट प्रासंगिक बनकर रह गया और पहले की तरह आरक्षण की पूर्व निर्धारित 50% की सीलिंग टूट गई। मेरी मांग है कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में OBC की आबादी 52% तय की थी तथा OBC के लिए समानुपातिक आरक्षण की अनुशंसा की, लेकिन इस समूह को 27% ही आरक्षण दिया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब जबकि सीलिंग की सीमा टूट गई है तो हर वर्ग समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जाति जनगणना उचित और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा हो सके। सब मुझे जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश में एक बात की आकांक्षा जगी है कि सीलिंग बढ़ाई जाए। इतिहास उठाकर देखकर तो पता चलेगा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण को लेकर अब तक की सारी सरकारों का रवैया टाल मटोल और यथास्थिति बनाए रखने का ही रहा। कालांतर से काल लेकर आयोग से भी मंडल आयोग की यात्रा को देखकर तो इनकी अनुशंसा के बाद भी कांग्रेस वर्षों कुंडली मारे बैठी रही। वीपी सिंह ने राजनीतिक दबाव में इसे लागू भी किया तो आधे अधूरे रूप में। समझ में तो जहां जहां लागू किया सरकार ने नियम कानून आरक्षण के मसलों को उठाकर खूब सारी विसंगतियां पैदा कर दी थी। मेरे ही राज्य राजस्थान की बात करूं तो 17 अप्रैल 2018 को ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में उस समय जो भाजपा की सरकार थी परिपत्र लेके आई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कई प्रकार की विसंगति आई। ओबीसी वर्ग के युवाओं को 40,000 नौकरियां उस परिपत्र की वजह से चली गई। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के युवाओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात नहीं हो। एक मिनट मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक छोटा ही है साहब, आप 2-5 मिनट सभी बोल रहे हैं। मेरे राज्य के विश्नोई समाज जो ग्रामीण एवं कृषक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और जाट समाज से अपना इतिहास साझा करते हैं। जब विश्नोई पंथ की स्थापना हुई उस समय सबसे ज्यादा 99% जाट नौजवान ही विश्नोई बने थे उस समय। इन्हें राजस्थान में तो ओबीसी में शामिल कर लिया गया विश्नोई समाज को, लेकिन केंद्र में ओबीसी में आरक्षण नहीं दिया गया। विश्नोई समुदाय की आस्था और विश्वास सभी वन्य जीवों की सुरक्षा है और एक प्रकार से जाटों के प्राकृतिक सहयोगी रहते हैं। ऐसे में इनका आरक्षण से वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार राजस्थान में सिद्ध जाति को राज्य के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग काफी समय से की जा रही है। इसके लिए जाति एक मिनट समाप्त कर रहा हूं सर, ये डिमांड कर लेता हूं पूरी आधा मिनट। वेरी स्मॉल जाति आवश्यक मानदंड पूर्ण करती है। सिद्ध जाति भी राजस्थान में जाट समाज से निकली हुई जाति है। इसी प्रकार कामखानी मुसलमानों को राजस्थान में तो ओबीसी वर्ग में शामिल करेगा परंतु उन्हें केंद्रीय ओबीसी कोटे में अभी तक नहीं लिया गया। मेरी मांग है विश्नोई सिद्ध कामखानी मुस्लिमों के साथ उन तमाम जातियों को केंद्र में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में सम्मिलित किया जाए जिन्हें राज्यों में न तो ओबीसी का लाभ मिल रहा है परंतु केंद्र में ओबीसी में सम्मिलित नहीं है। मेरी मांग है समझ में एक मेरी आखिरी मांग कि इस देश के कम से कम 10-12 ऐसे राज्य हैं जहां जाट वहां की स्टेट में तो ओबीसी के अंदर है लेकिन केंद्र में नहीं है। उन तमाम राज्यों के जाटों को भी केंद्र में आरक्षण का हक मिले, आरक्षण मिले उनको, ये मेरी सदन से मांग है। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री तोल तिरुमालवन जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நெடுங்காலத்து கோரிக்கை நிறைவேறியிருக்கிறது. இது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக நான் பெருமைப்படுகிறேன். சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாட்டில் இது குறித்து முதலாக பேசிய இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. சில ஆயிரம் பேர்களை மட்டுமே கொண்ட ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அரசின் எந்த நலத்திட்டங்களையும் நுகர முடியாதவர்களாக, கல்வி வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றை பெற முடியாதவர்களாக வஞ்சிக்கப்பட்டு வந்தார்கள். அதற்கு காரணம் அவர்கள் இத்தனை காலமும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்ததுதான். இப்போதுதான் அவர்கள் பட்டியல் இனம் என்கிற பழங்குடி இனம் என்கிற பட்டியலில் இடம்பெறப் போகிறார்கள். அந்த வகையில் பரிந்துரைத்த தமிழக அரசுக்கு, குறிப்பாக தமிழக முதல்வருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். தமிழ்நாட்டில் பட்டியல் இனத்தில் ஷெட்யூல் காஸ்ட் 17 சமூகத்தை சார்ந்த பிரிவினர் பழங்குடியினத்திற்கான பண்புகளை கொண்ட சமூக பிரிவினர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு இந்திய ஒன்றிய அரசு ஒரு வழிகாட்டுதலை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பைரா, பக்கூடா, சண்டி, பெல்லாரா, தொம்பன், கொடகாலி, கொட்டா, கோசாங்கி, ஹோலியா, ஜக்காலி, ஜம்புவுலு, கூசா, குரவன், நாயாடி, வேடன், வேட்டுவன் என்கிற இந்த சமூக பிரிவினர்
ஷெட்யூல் காஸ்ட் பட்டியலிலே இருந்தால் எந்த பயனையும் அவர்களால் நுகர முடியாது. ஆகவே பழங்குடியினர் பட்டியலில் இவர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இதுபோல எந்தெந்த மாநிலங்களில் பழங்குடியினர் பட்டியல் இனத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு உரிய வழிகாட்டுதலை தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் 12.6% மக்கள் புலம்பெயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். மாநிலம் விட்டு மாநிலம், இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரன்ட்ஸ். ஏறத்தாழ 15 கோடி மக்கள். இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் என்று சொல்லலாம். இவர்கள் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்வதனாலேயே அந்தந்த மாநிலத்தில் தான் சாதி சான்றிதழ் காட்டி கல்வியோ வேலைவாய்ப்பையோ பெற முடியும் என்கிற நிலையில் அவர்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள். உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் காரணமாக இந்த பாதிப்புக்கு அவர்கள் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்ல, ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் மற்றும் ஓபிசி, தி ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ், இது இடபிள்யூஎஸ் பிரிவினருக்கு பொருந்தாது. ஆனால் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிரிவினருக்கு புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற காரணத்தினாலேயே தமிழ்நாட்டிலிருந்து சண்டிகாரில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள், மும்பையில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள், ஏன் டெல்லியிலேயே ஏராளமானவர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் அவர்களின் சொந்த மாநிலத்தில் இருந்தால்தான் சாதி சான்றிதழ் பெற்று கல்வி வேலைவாய்ப்பு என்கிற பயனை நுகர முடியும் என்கிற நிலை இருக்கிறது. இதை மாற்றுவதற்கு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கல்வி வேலைவாய்ப்பில் அவர்களுக்குரிய வாய்ப்பை வழங்குவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அகில இந்திய அளவில் ஷெட்யூல் காஸ்ட் மக்கள் தொகை என்பது 17% உயர்ந்திருக்கிறது. அதேபோல ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் பழங்குடியினருடைய மக்கள் தொகை என்பது 9% உயர்ந்திருக்கிறது. ஆக அந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்துவதற்கு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பழங்குடியின மக்கள் இன்றைக்கு வனப்பொருட்களுக்கு முன்னுரிமையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். வனம் இந்திய ஒன்றிய அரசால் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்கிற பெயரால் பழங்குடியின மக்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றி அதை கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய அநீதியாகும். ஆகவே அந்தந்த பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வன பொருட்களுக்கு, உற்பத்தி பொருட்களுக்கு அவர்களுக்கே முற்றுரிமை வழங்க வேண்டும். அதில் கார்ப்பரேட்டுகளின் தலையீடு கூடாது. அதற்கேற்ப அரசு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் நான் வலியுறுத்துகிறேன். மேலும் இந்த ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இது குறித்து உடனடியாக ஒரு தீர்வை காண வேண்டும். அந்த பள்ளி மாணவர்களின் வயிற்றில் அடித்த இந்த செயற்பாட்டை நான் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். பல கோடிகளை, பல ஆயிரம் கோடிகளை, பல லட்சம் கோடிகளை கூட நாம் விரயம் செய்கிறோம். கடனுதவி என்கிற பெயரால் யார் யாரோ கடனை வாங்கி கொண்டு திருப்பி செலுத்தாமல் அதை தள்ளுபடி செய்யும் நிலையை பார்க்கிறோம். ஆனால் ஏழை எளிய குடும்பத்தை சார்ந்த பழங்குடி மாணவர்கள், பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய இந்த கல்வி உதவித்தொகையை நிறுத்தியது மிகப்பெரிய அநீதி என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே மீண்டும் அவர்களுக்கு அந்த உதவித்தொகையை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable Member Shri P. Ravindranath. Thank you, Chairperson, sir, for providing me this opportunity to express my views on the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. Sir, I have already made a request to the government to include this Narikuravas in the Scheduled Tribe list of the Central on this August House on 5th April 2022. At this juncture, I thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Minister of Tribal Affairs Sri Arjun Munda ji for accepting our Tamil Nadu long-lasting demand and my request, and for considering and passing this bill. Sir, I would also like to recall that it was AIADMK that has been vociferous in backing the rightful demand of
former chief ministers. Very beginning, when Purachi Thalaivar MGR, our founder of our party, took up the issue in 1980, and later on, our party permanent AIDMK General Secretary, former Chief Minister of Tamil Nadu, Purachi Thalaivi Amma, demanded in 2013. Their demand for scheduled tribe status is one that began way in 60s when the Lahore Committee recommended for their inclusion in the ST category. The community has been a subject of years of oppression as they tend to live a nomadic life across the state. On that note, I have full confidence that this move by the NDA government will go a long way in aiding them in their social, educational, and economic development. Sir, I would like to bring to the attention of this August House regarding the demand of the, kind attention to Honorable Minister, demand of the Koravar community from Tamil Nadu for inclusion in the ST category. The Tamil Koravar community has suffered years of oppression and social exclusion on account of their categorization of as criminal tribes by the Britishers. They are currently categorized under the most backward class as denotified communities. The Koravas are often confused with the Nari Koravas, and this confusion creates obstacle pertaining to fulfillment of their demands. In fact, this was pointed out way back in, sir, important, I finish it, sir. Way in 1985 by Tamil Nadu's second backward classes commission. So I request the Honorable Minister to include Koravar as well as Bagada and Kuruman communities as well as in the ST list of the central government. So finally, I seek a clarification from the government with respect to the status of the ethnographic survey of 267 denotified nomadic and semi-nomadic tribes, which was being conducted by the Anthropological Survey of India and Tribal Research Institutes. As we are aware, these communities currently do not feature in the SC, ST or OBC list. In the event of the survey still going on, I urge the government to expedite the process in order to ensure equality, justice and welfare for these communities. And one more request to the government. Sir, these scheduled tribes peoples are very strong and talented in sports. So I request the government to develop more infrastructures like grounds, providing sports equipment, gym, etc. for their people. So through this, I support this bill. Thank you. Member Sri Venkatesh. அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். நரிக்குறவன் மற்றும் குருவிக்காரன் சமூகத்தை பழங்குடியினர் பட்டியலுக்கு கொண்டு வருகிற இந்த திருத்தத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வரவேற்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த மசோதாவின் மீது 2 திருத்தங்களை இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். நரிக்குறவன் குருவிக்காரன் என்று இன் விகுதியிலே இருப்பது மரியாதை குறைவானது மட்டுமல்ல, அந்த சொல் என்பது ஆணை மட்டுமே குறிக்கும், பெண்ணை குறிக்காது. எனவே பன்மை விகுதியில் நரிக்குறவர் குருவிக்காரர் என்று திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல ஏற்கனவே தமிழக அரசு பரிந்துரைத்திருக்கிற பட்டியல் சமூகம் மற்றும் பழங்குடி சமூகத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய பரிந்துரைகள் பல நிலுவையிலே இருக்கிறது. அவற்றையெல்லாம் உடனடியாக ஒன்றிய அரசு கணக்கில் எடுத்து உரிய திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Member Sri Nabha Kumar Sarnai. Not there. Sogatar. Honorable Member Sri Saudaraji. Yes, yes. आगे 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 ओके सर कौन बोलेगा? नहीं वो आगे. नबा कुमार सरनाई. सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मैं इस विधेयक को सपोर्ट में बोलता हूँ और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट
और सेंट्रल सरकार ने ये कदम उठाया, ये बहुत अच्छा है। सर, मेरे आपके जरिए यही मांग है, असम का भी से कम्युनिटी है, कोच जनजाति, आदिवासी, आहोम, मोरान, मटक, सोतिया, वो लोग भी बहुत साल से पहले अपने को एसटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसको ना एसटी किया गया, ना उसको ना बोला। और दूसरा बात है, हमारा असम का सारेने कसारी, मदाही, थेंगाल कसारी, उन लोग पहले से एसटी है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उसको उसी नाम से डालने के लिए असम गवर्नमेंट ने भेजा है। तो मेरा आग्रह है हमारा मंत्री महोदय से, ये कब तक सेंट्रल लिस्ट में आएगा। दूसरा बात है सर, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो घटना हुआ था आदिवासी के साथ, उनका पहले 20% कम हो गया, 30% आ गया, फिर अटक गया। मेरा वही मानना है, हमारा सुप्रिया सुले जी हो या हनुमान बेनीवाल जी, जिसने वो बोला है, एक्चुअली जो लोग मांग कर रहे हैं, चाहे जाट हो, चाहे मराठी हो, सबको अपना अपना हिस्सा देना चाहिए। वही मेरा भी ये आपके गुजारिश करना है। दूसरा बात है, ये जो आदिवासी को मेन स्ट्रीम लाने के लिए ये जो पहल करे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ जिस स्टेट में ये अभी भी काम बाकी है, उसको एक साथ पूरा करने से अच्छा होता है। और दूसरा बात, हाल ही में जो राजस्थान में कार्तिक भील बोल के जो आदिवासी एक्टिविस्ट था, उसको बेरहमी से मार दिया गया, और उसके न्याय के लिए सारा प्रदेश में आदिवासी लोगों ने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे सिर्फ यही नहीं है, छत्तीसगढ़ में हम हाल में जो विजिट किया, वहाँ भी बहुत सारा जो लोग आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, उसको भी वन विभाग ने बहुत सारा धमकाया था। ऐसा इंसिडेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं, बहुत सारा प्रदेश में हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार और स्पेशली केंद्र सरकार और हमारा पार्लियामेंट को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का वही उम्मीद है, लास्ट उम्मीद, जब पार्लियामेंट हमारे लिए कुछ करेगा। हाल ही में यूपी में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसमें नगर निगम में, जिसमें 2 एसटी रिजर्व सीट भी है, और हाल ही में बहुत सारा गौन को एसटी सूची में लाया हुआ है, इसको और ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन नगर निगम इलेक्शन में उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-15 हज़ार रुपया पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। मुझे लगता है असम गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया सर्टिफिकेट के लिए, ऐसा अगर सिस्टम देश में फॉलो किया जाए तो भी मुझे लगता है यही दिक्कत खत्म हो जाएगा। और सर, मैंने बोला ही है, हमने जब सारा आदिवासी एरिया में घुमा है तो भी पता चला लोग कितना मुश्किल में जी रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है आदिवासी के लिए, लेकिन वो धरातल में नहीं है। तो मेरा मिनिस्टर जी से वही आग्रह है हमारे स्पीकर महोदय के जरिए, जो आदिवासी के लिए जितना सारा स्कीम प्रोजेक्ट है वो 100% इंप्लीमेंटेशन हो, उसमें करप्शन ना हो, ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ में हाल ही जो सिस्टम हुआ है उसके लिए जरूर पहल करना चाहिए, गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देना चाहिए। और हमारा जो लास्ट उम्मीद है ये पार्लियामेंट का, उसको खरा उतरना है। थैंक यू सो मच सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 15 दिसंबर 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।